across everyone. Welcome to the Cārvāka podcast. This is your host Kushalmehra. All right. So my guest today is Vinamre Kasanaa, and today we are going to talk about things that I know very little about. That is music, art, and the internet. Vinamre, welcome. बहुत बहुत अभी doing this in English or Hindi? अरे जिसमें Primarily करना English. कर, हिंदी में भी कर, इंग्लिश में भी कर, जिसमें करना कर. Done, Sina. Thank you so much, Kushal, for inviting me to the wonderfully amazing Cārvāka podcast with that spelling. I'm grateful to be here. I'm excited to talk about music, art, and the internet and other esoteric categories which you know little about and which I Yeah, know something about, thoda bahut at very least. good. तो अच्छा, Yeah. सो जस्ट टू गिव एवरीवन अ ब्रीफ बैकग्राउंड कि वाई हमने ये डिसाइड किया ये करने का. सो ऑब्वियसली विनम्र जब बॉम्बे आया था तो उसने मुझे मुंबई में बुलाया था कि भाई आप आओ बात करो. तो मैं उधर गया, मैंने बात की. तब मैंने रियलाइज़ किया कि बाद में जब ऑफलाइन बात हो रही थी तो विनम्र मुझे क्या बोल रहा था, तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. तो मैंने Actually, रियलाइज you read the undertones from that कि ऐसा हमेशा, but ऐसा नहीं होता. I think so you just, yeah. so at that time मैंने realize किया कि okay, I need to get in touch with what I like to use the word pop culture loosely, but I think I should try and understand it more. I should try and understand it more from uh, I guess a younger person's perspective, because I come from an era where the pop culture was very different and the pop culture has moved on, and pop culture is very important. Pop culture matters Hmm. a lot of how we think, a lot of what we do, a lot of how our behavioral patterns are shaped is actually downstream from pop culture. So it was I think he is the perfect person. मगर तू पहली बार आया है पॉडकास्ट पे, तो एक काम कर, सबसे पहले सबको अपने बारे में कुछ बता. ठीक है, my name is Vinamre. I run DostCast. Our tagline is India's fastest growing podcast, which is factually accurate. I bring on guests from all walks of life. I do this 5 days a week. I was a student of advertising and religion at Boston University, and I'm from Faridabad, Haryana. वेरी गुड. मतलब हरियाणा के हो तुम लोग, मतलब सारे के सारे तुम हरियाणा वाले अभी आना शुरू हो गए हो. मतलब तू हो गया, फिर वो प्रखर भी फरीदाबाद, मतलब वो हरियाणा एडजेसेंट ही हो गया. प्रखर भी हाँ वहीं नहीं, से हो हरियाणा गया. में ही है. It's the biggest industrial city of Haryana. हाँ, तो वही मतलब मैंने, मतलब फरीदाबाद वालों को है ना दिल्ली ने ओन करके रखा हुआ है, इसके लिए मैं ये जानबूझ के बोल रहा था. देखो दिल्ली में this is where the seat of political power is, but if you think about the biggest content creators in India, there's Cārvāka, there's Prakhar, there's me, बाकी कौन है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं. तूने सलोनी का दिल तोड़ दिया. सलोनी भी तो तुम्हारे साइड से ही है Saloni ना is in वो. Noida. Saloni is in Noida. नोएडा में अच्छा नहीं था तो अच्छा, फिर देखो, Saloni फिर is in तो Noida. सलोनी शी इज रिप्रेजेंटिंग नोएडा साइड. बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, अभी अगर कंटेंट लैंडस्केप से शुरू करते हैं बात करने को, Sure. तो अभी कंटेंट लैंडस्केप जो है, पहले क्या होता था, मैं तेरे को बता रहा हूँ, ये बहुत साल पहले की यूट्यूब स्टोरी इंडिया में कैसे चालू हुई थी. पता नहीं कितने लोगों को पता है कि नहीं. यूट्यूब ने इंडिया प्रोजेक्ट को एज अ ये एक बेसिकली जिसको बोलते हैं ना, एक चैरिटी प्रोजेक्ट चालू किया था. सो पता नहीं कितनों को याद है कि यूट्यूब ने इन्वेस्ट किया था 2 कंटेंट क्रिएटर्स में इन देयर अर्ली डेज. एक था शायद ये जो टीवीएफ है, और दूसरा AIB. एआईबी. इन्होंने लिटरली ऐसे चैरिटी प्रोजेक्ट चालू किया था कि हम पैसा डालेंगे, तुम कंटेंट क्रिएट करो और हम लाएंगे. नाउ आई लाइक टीवीएफ. एआईबी के बारे में आई डोंट हैव एनी कमेंट्स. आई मीन दे आर व्हाट दे आर एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट इन लाइफ. बट इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो एक यूट्यूब का आउटलुक था ना, वो एक बड़ा सा मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई बेस्ड आउटलुक था तभी तभी की यूट्यूब का. मगर अगर मैं आज की यूट्यूब को स्टडी करूं, आज के यूट्यूब को और आज के यूट्यूब कंटेंट लैंडस्केप को स्टडी करूं ना, तुझे नहीं लगता कि वो बॉम्बे दिल्ली वाला डोमिनेशन खत्म हो गया और अभी बाकी शहर वाले कंप्लीटली टेक ओवर कर चुके हैं? It's the same trend that is now emerging in OTTs, where UP and Bihar have more of a say in what web series will be made, what will be the time period, क्या flavor क्या होगा उनका. और सेम चीज कंटेंट के अंदर भी है. वर्नाकुलर कंटेंट क्रिएटर्स, देयर इज अ ह्यूज तेलुगु मार्केट, देयर इज अ ह्यूज मराठी मार्केट, देयर इज अ ह्यूज गुजराती मार्केट. ऐसे ऐसे लोग हैं अनप्रोनाउंसेबल नामों के शहरों से, जहाँ पे इंटरनेट भी मतलब कभी आता है कभी नहीं आता, राइट.
and they have started to sort of at least begun to dominate what typically would be an English. If you also think about it, majority जो भी content पहले YouTube पे आता था would be either completely in English or a brand of Hinglish. अब it is totally okay to speak in your vernacular language and instantly gain like a massive following because subsets इतने सारे हैं. You and I could be in a room and everyone would recognize me and no one would recognize you. Similarly, हम किसी और room में जाएंगे, they would recognize you and not me. There are subsets of popularity which are so weird that एक room के अंदर 20 बंदे famous हो सकते हैं and they might not know each other. Yeah, and let me tell you, I was just researching about India's content landscape for a podcast that मैंने जो तुझे बताया for which Right. I have been invited now. I might go in a week or so. तो यार, I came across this channel called Mr. Indian Hacker. ये बंदा है राजस्थान से, ठीक है. मैं उसका कंटेंट प्ले नहीं करूंगा फॉर कॉपीराइट वायलेशन, मगर यार मैं हैरान हूं, 27 मिलियन बंदे के सब्सक्राइबर हैं. 27 मिलियन, हाँ विनम्र, ऑलमोस्ट. और बंदा राजस्थान से है. ही स्पीक्स इन एग्जैक्टली हिज लैंग्वेज. ये बंदा है. और इसके वीडियोस Right. हैं, मतलब गाड़ी तोड़ दी, ये कर दिया, गाड़ी के साथ ये कर दिया, किसी और चीज के साथ वो कर दिया. यार ये अलग ही दुनिया है. और इतने सारे सब्सक्राइबर्स, पीपल आर वाचिंग, व्यूज देखो 12 मिलियन, 11 मिलियन. और कुछ गंद नहीं फैली जा रही है, मतलब जिस जनरल पॉप कल्चरिस्ट चीजें ये लोग बात करते हैं. और दे, यू नो व्हाट आई फाउंड वेरी हार्टनिंग, and this is why I was so happy in my research on India's YouTube landscape, was these are rooted kids. They are very much rooted in their culture. They understand their culture. They don't pretend to speak in English. They speak in their language. ये मेरी भाषा है, मैं इसमें कंटेंट बनाऊंगा, मैं अपने लोगों के लिए कंटेंट बनाऊंगा. मुझे किसी अंग्रेज को मतलब प्रेजेंट नहीं करना, कुछ मेरे को उससे अवार्ड नहीं चाहिए. मुझे मेरे ही ऑडियंस इतना बड़ा है उससे मिल जाएगा. आई डोंट नो इफ यू न्यू अबाउट इट. मेरे को भी नहीं मालूम था, लिटरली कसम खा के कह रहा हूं. मैं कल रात को मुझे पता चला है जब मैं लिस्ट देख रहा था ऑफ पॉपुलर इंडियन यूट्यूबर्स. जाके मतलब कौन क्या हो रहा है इंडिया में यूट्यूब में. मैं तो अपने साइलो में रहता हूँ. It was just a research project and I just went across and I looked at this world of YouTube, and these are all tier 2 kids, tier 3 Yeah. kids, or tier 1 kids, not metro cities. These are all from non metros. This is fascinating. Right. दो तीन चीजें हो गई. एक, the emergence of the app called KineMaster, which is a phone Okay. editor which allows you to splice together videos on your phone that Okay. basically mimic the effect of roughly जो Premiere Pro वगैरह होता है, which people use Mhm. on computers. Second, the Geo Revolution, obviously, right? जब से Geo Revolution आया, and third, COVID. All of those things resulted in this kind of एक ऐसी चीज जहां पे हम बोलते हैं ऐसे वर्ड को wholesome creators, right? Mhm. A non-roasty, non-edgy creator जो मतलब हाय गाइस, ये मेरा परिवार है, हम ऐसे सुखद रह रहे हैं, देखो हम आप खिचड़ी खा रहे हैं, बट प्रिटेंड भी नहीं कर रहे. लाइक जेन्युइनली लाइफ यही है, मतलब देयर इज नो फिल्टर. एक होता है मैन्युफैक्चरिंग स्पेक्टिकल्स, राइट, जो आप व्लॉग में टिपिकली करते हो थोड़ा बहुत, कि एक काम करते हैं, गाड़ी मार देते हैं यहाँ पे, उससे व्यूज आ जाएंगे, राइट. There's people like Saurav Joshi. I think he's India's biggest vlogger now. I've spoken to him a bunch. He lives in Haldwani. He's built his entire career from YouTube. और वो legit अपने जैसे घर में बड़ा बेटा होता है ना, errands पे जाता है कि यार जा दूध ले आ, पनीर ले आ, ठीक है, ये सब अपने siblings को बैठा के वो सब करता है while he's vlogging. It isn't like देखो मैं एक glamorous celebrity vlogger बन गया हूँ, मैं रेड कार्पेट पे चल रहा हूँ, मुझे क्रिएटर बनने के अवार्ड्स मिल रहे हैं. It's also the fact that it's a daily vlog. So जिन लोगों को सोप ओपरास की आदत थी, जिन लोगों को बिग बॉस की आदत थी, they found a new place to park their attention at, and it's vlogs on YouTube. It's interesting. मतलब basically I'm trying to understand. So why do these things work? Is it the relatability कि मैं भी अंडा लेने जाता हूँ और ये भी अंडा लेने जा रहा है, इसके लिए मैं अंडा लेने जाने वाले को देख रहा हूँ? क्या रीजन क्या है? यार एक तो bingeability है, दूसरा it does not require, for the lack of a better term, it does not require any brain cells. For example, to access your podcast, it requires some degree of close reading of philosophy. थोड़ा knowledge तो होना चाहिए कि देश में चल क्या रहा है या दुनिया भर में क्या चल रहा है, right? There is none of that.
Second, it does not require anything beyond just clicking and watching because it's all made for you. You don't have to kind of follow along. जैसे conversation के अंदर करना पड़ता है, but you have to use more of your senses. All of it is visual delight. Scene by scene by scene. अब हम यहाँ जा रहे हैं, अब हम वहाँ जा रहे हैं. At all points, you're directly addressing the audience. Guys, ये देखिए, अभी मेरे को थप्पड़ मार रहा है. Guys, चलो आओ मैं आपको अपनी बाइक दिखाता हूँ. So it keeps you hooked. And weirdly enough, if you will see, people will admit to watching something else in public. But अगर सही में जानना है, watch their YouTube history. I mean, वो या तो shame से मर जाएंगे, embarrassment से वो हो जाएंगे. Because लोगों का जो guilty pleasure है ना इंडिया के अंदर, वो ऐसे ही channels है. They might say कि oh I watch a Cārvāka podcast, cool बनने के लिए कि भाई मैं intellectual हूँ, मैं समझता हूँ क्या चल रहा है. But actually अगर उनसे पूछो, Cārvāka podcast शायद एक बार देखेंगे कि भाई देख लिया, हाँ ये भी कुछ होता है. Actually पूरे टाइम देख. Me personally, what am I saying? मैं स्कॉटलैंड का यूट्यूबर देखता हूँ जो गाय के हूव्स को वो करता है, काटता है उनको, जैसे उसमें चोट वगैरह लगी होती है ना, तो वो एक नाइफ लेके जाता है, वो गाय के हूव्स को पॉलिश करता है, उन्हें धोता है, फिर उसके अंदर से एब्सेस वगैरह निकालता है. इट्स सच अ डोपामीन टाइप जॉय इन इट कि उसको देखते रहो देखते रहो देखते रहो. वो बोलता है कि आज इस गाय में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है. आई थिंक द बिगेस्ट रीजन फॉर दिस is it is not curated programming, it's just algorithmic. So the platform will literally give you more of what they think you would like, and once you start signaling with being on the video more, which is called watch time, they're like हाँ भाई और ले ऐसी तरह की और वीडियो ले, which is so different from say टीवी प्रोग्रामिंग जहाँ पे भाई 9 बजे प्राइम टाइम आएगा, 10 बजे कुछ और आएगा, 11 बजे आहट आएगा, राइट, whatever is like that. It's all one size fits all. यहाँ पे या ऐसा नहीं है. या मैं भी एक्चुअली, क्या लोगों को पता ही होगा कि लाइक आई हैव अ ह्यूज थिंग फॉर क्रिंज वीडियोस जो लोगों को इरिटेट करते हैं. सो आई वॉच ऑल क्रिंज वीडियोस. मतलब माय ट्विटर एल्गोरिदम, यू नो व्हाट इट इज, एवरी 2 days इट विल शो मी समथिंग, बिकॉज इवन द एल्गोरिदम हैज अंडरस्टूड कि ये बंदा ही लाइक्स क्रिंज वीडियोस जहाँ पे लोग गिर रहे हैं, लोगों को चोट लग Right. रही है, लोग उल जलूल हरकतें कर रहे हैं. I used to watch all cringe TikTok when TikTok was a thing in India, जिसमें Yeah. वो कौन थी, दीवा करके कोई थी दीवा नाग या पता नहीं क्या था उसका नाम. वो औरत इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गाने गाती थी, मेरे को इतना इटर्नल आनंद मिलता था उसको सुन के. मैं अपने सारे दोस्तों को भेजता था उसकी चीखते चिल्लाने वाली आवाज. बहुत अच्छा लगता था मुझे उसको देख के. हाँ, मैं क्रिंज पे एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड पॉइंट. ये ना, दिस इट्स बिकम अ वॉर ऑफ द क्लासेस ऑन द डेफिनेशन ऑफ क्रिंज. ठीक है. हम्म. For example, the guy I was telling you about, Puneet Superstar, he bashes cakes on his face for a living and he wishes people happy birthday. और वो चिल्लाता है. Right? Now, you are probably used to seeing someone from your class make content for you. या तो class adjacent है, या similar class है, या higher class है. फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान मेरे को बोलेगा क्या तुम्हें मेरी तरह सेक्सी और कूल बनना है, मैं बोलूंगा हाँ मुझे भी बनना है, क्योंकि आप मुझसे ऊपर हो, आप एक सेलिब्रिटी एंटरटेनर हो और मैं नीचे हूँ. फॉर एग्जाम्पल, when you go down social classes, right, the reality with which, the honesty with which they portray their reality turns you off. अभी तक इंटरनेट इंडिया का बहुत ज्यादा गेट केप्ट था जियो से पहले. अब तो फ्लड गेट्स आर ओपन एंड द टाइगर्स हैव ब्रोकन फ्री. तो जो ये हम क्रिंज बोलते भी हैं, इट्स यूजुअली अ डिफरेंस इन आवर डेफिनेशंस, राइट. क्योंकि अब क्या है कि पहले हमें टीयर 2 टीयर 3 इंडिया का एक्सेस नहीं था, वो एक्सेस मिल गया है और हमें वो देखना पड़ रहा है. We spend so much money by putting ourselves in mansions, by doing things, by moving to nicer localities, so we can avoid a lot of quote unquote the misery of India, the whole, क्या बोलते हैं, the chaos of India. पर वो हमारे इंटरनेट पे आना शुरू हो गया है. Weirdly enough, a lot of people who are like higher up in social classes love cringe content. That's all they want to watch. These Let me people are tell their you, heroes. this is a woman I have a lot of respect for. Diya Nag, 1.15 million subscribers. Uh-huh. इसके अगर मैंने वीडियोस दिखा दिए लोगों को, पहले ये जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए वीडियो बनाती थी. You और can go to most popular on the top and see the one that's most popular. कहाँ किथे गया भाई. हाँ, ये टॉप राइट पे सॉर्ट बाय है ना, सॉर्ट बाय. सॉर्ट बाय, हाँ सॉर्ट बाय, राइट हाँ. राइट, हाँ ये मोस्ट पॉपुलर. ये बंदी है ना, ये देखो इसके मोस्ट पॉपुलर वीडियोस ये है. बट लेट मी टेल यू, आई यू नो व्हाई आई लाइक्ड हर द मोस्ट. She या started off her career on TikTok. She used to mock the shit out of people like us, urbanites. हाँ
and I loved her for that. She would mock people and mock people and mock people, and I used to love it. And she used to sing so besura. I used to love Hmm. it. ये इतनी बेसुरी थी ना ये लड़की. I loved it. I was in love with her content. And then क्या हुआ, टिकटॉक बंद हो गया, she disappeared. हाँ. इतना मजा आता था ये बंदी को सुन के, इतना मजा आता था. मैं अपने सारे दोस्तों को ये भेजता था. इसके ना मैंने वीडियो क्लिप कर करके खुद 10 सेकंड के वीडियो बना के, जहां पे ये पीक चिल्ला रही होती है, वो मैंने Right. भेजे हुए लोगों को. मेरे को बहुत मजा आता था. सो आई एक्चुअली लाइक, एंड आई डोंट थिंक दे आर बिलो मी. Let me be Mm-hmm. very categorical. YouTube has Right. changed lives. These people are above me. I admire them. I look up to them. I Right. look up to them because they are so comfortable with what they are. They don't have one bone of pretense in them. They are desi kids doing their desi thing, and I love them. एंड दिस इज व्हाट आई लव अबाउट देम, कि इनको किसी के बाप की नहीं पड़ी हुई है. ये इन्होंने अपना जो करना है कर रहे हैं. इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस की जो श्याम शर्मा शो है, जो मैं, अभिजीत और श्याम हम तीनों करते हैं, जो पॉलिटिकल शो है जो थर्सडे को चलने वाला, वी नो व्हाई वी सक्सीड दिस, बिकॉज वी ऑल्सो आर व्हाट वी आर. हम किसी के बाप की परवाह नहीं करते, कि हमको जो Hmm. करना है करते हैं. हम मोदी की भी लेते हैं, हम ममता बनर्जी की भी पीछे जाते हैं, हम राहुल गांधी तो है ही हमारा प्यारा राज दुलारा. तो हम, एंड व्हाट पीपल लाइक इज व्हेन यू आर ऑथेंटिक. एंड दिस इज व्हाट आई लव अबाउट दिया नाग. शी इज ऑथेंटिक. शी इज सो अमेजिंग. अब लोगों को झिंचक पूजा पसंद नहीं है भाई, हम तो एडमिट करते हैं, हम तो उसका भी सुन लेते हैं. Right. हाँ. मजा आता है मेरे को हाँ, तो ये उनको सीन सुन तो के. है. मगर टुडेज पॉडकास्ट इज नॉट अबाउट क्रिंज. सो अब मेरे को एक बात बता कि चल क्या रहा है. अच्छा मेरे को बात बता, अभी 8 में चल क्या रहा है. मैंने बहुत 17 मिनट खा लिए लोगों के. आर्ट में क्या चल रहा है? आर्ट में हम्म. नई चीज आई है फिलहाल तो, जिसपे ट्विटर पागल हुआ पड़ा है. टेक क्या? ट्विटर पागल हुआ पड़ा है. इट्स कॉल्ड डाल ई. ये क्या होता It's है? this Y Combinator backed open AI platform in which if you put writing prompts हम्म. and you put a semicolon and you specify which style of art you want, it will literally generate art for you that is a as close to something that maybe a Photoshop designer would make, an artist would make. For example, एक आर्टिस्ट लेते हैं रवि वर्मा, राइट? रवि वर्मा इज अ फेमस पेंटर फ्रॉम द पुराने जमाने का इंडिया के अंदर, जो इंडियन भगवानों की पेंटिंग्स वगैरह बनाता था, जिसने शकुंतला की पेंटिंग बनाई है, 3-4 ऐसी पेंटिंग्स बनाई. आई एम श्योर यू फेमिलियर विद दैट स्टाइल, हम्म. राइट? तो आप क्या कर सकते हो ओपन एआई में? आई एक्चुअली डैली के अंदर आई एक्चुअली डिड इट. पोलर बेयर स्केटिंग ऑन, let's say, polar bear on a surfboard, let's call it that, right? And then you put a semicolon and you say रवि वर्मा स्टाइल. तो रवि वर्मा स्टाइल के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ भगवान होते हैं, पोलर बेयर आ जाता है. I tried another thing on it, another prompt. I'll send you some of these after the podcast, क्योंकि मेरी लैपटॉप में नहीं है, मेरे दोस्त के लैपटॉप में है. उसको एक्सेस मिल गई थी, हम पूरी रात बैठ के डाल यूज कर रहे थे to see how we could potentially game it. Then I did Shiva drinking a beer, right? To see what happens. The computer had understanding कि उसने 4 तरह की वो बना दी, and Shiva was actually drinking a beer. It looked very real in a beautiful jungle of sorts, and the beer was from a conch shell. ये मशीन बना रही है, ये AI बना रहा है, ये इंसान ने नहीं बनाया. मतलब every fourth or fifth prompt it has some problems. फेस थोड़ा सा मॉर्फ हो जाएगा, कोई और दिक्कत हो जाएगी, but mostly it's spot on. What it needs is constraints. You can't dead name people. You can't use living people like Donald Trump, Hitler. ये सब नहीं use कर सकते. Anyone else also. But it can literally, it can make a lot of artists redundant. Genuinely. इतना अच्छा है वो. अच्छा तेरे को ये That's the big. एनएफटीज के बारे में मालूम है क्या होते हैं? एनएफटीज क्या है आजकल, ये तमाशा चालू I है. know what NFTs are, but I'm not the best guy to talk about it. In fact, this T-shirt, fresh produce, हम्म. is from these artists Mad Star Base. इन्होंने अपनी खुद की NFTs निकाली थी. So this is an interesting intersection of music and art, where artists अपने early fans को NFTs देते हैं. As your career as an artist progresses, आपके NFT का वो भी बढ़ जाएगा प्राइस, तो आप आगे जाके बेच सकते हो.
Okay, interesting. So ये जो तू app बता रहा है, just wouldn't this be like one of the tools that people might start using for creating NFTs and stuff like that? Yeah, they have kind of done that, and it's totally okay to do that. There's no problem with that. But I think the biggest problem is then how do you keep generating the same style of NFTs? Because NFTs work on this kind of universal idea कि there's this one NFT called a Bored Ape Yacht Club वाली NFT जिसके अंदर Mm-hmm. सारे बंदर होते हैं, मतलब बहुत सारे हैं. And again, I'm an amateur in this. There are better people to explain this, but all of it involves an invisible rule or an invisible story. Mm-hmm. कि ये वाले बंदर हैट के साथ हैं, इन वाले बंदरों ने गांजा पी रखा है. It's a series of NFTs, right? And you sort of extrapolate the rules of that universe on your own. समझ रहे हो? Like there are invisible rules into what makes an NFT price go up or down. यहाँ पे Mm-hmm. वो दिक्कत होगा because it's all random. किसी ने अ की जगह द डाल दिया, इमेज कुछ और बन गई. So Mm-hmm. it's kind of harder. Mm-hmm. But the point is, uh, it's allowing a lot of tech-centric people to enter the arts. मतलब you no longer have to go to Shishti College of Art या कोई ऐसे और painting, watercolor वाले styles सीखने. You can literally tell a machine to do the job for you. क्या मगर I say this in as non-consent condescending a way as possible. इसमें art कहाँ आई? अगर What do you machine think सब is कुछ art? कर रहा है, like what is where is the inspiration coming from? Like where is that? If the machine is doing everything for you, what are you doing? So what is the You're human putting the input in? prompt. You're putting the prompt. आप ऐसे ही prompt नहीं डाल सकते. अब मैं लिखूं अ कैट तो कैट बहुत भद्दी आ जाएगी. बट इफ आई राइट अ पिंक कैट इन द स्टाइल ऑफ वर्मीर, आई हैव टू हैव बेसिक नॉलेज कि वर्मीर कौन था, कैट पिंक है. माय इनपुट इज द कंस्ट्रेंट. माय इनपुट इज वहां पे मेरा आर्ट आता है कि मैं कंस्ट्रेंट का डालता हूं मेरी राइटिंग का स्टाइल क्या है. बुरी राइटिंग वाले कामयाब नहीं है इसके अंदर, और जिन लोगों को आर्टिस्टिक स्टाइल्स के बारे में नहीं पता वो कामयाब नहीं है. सो थोड़ा सा लर्निंग कर्व है, ऐसी बात नहीं है. Okay, fair enough. So see, this is I got clarity now. So basically, the software is as good as the parameters you set the software in. करेक्ट. So the art comes in the parameters that are decided by the human, and the राइट. human is giving it in the form of inputs. Ki ab these are the parameters you play in, और अभी इनमें खेलो और इनमें जो art आएगी, that is going to go into the marketplace to be accepted or rejected by people, right? Correct, correct. You can also download it and use it as a template for your thumbnails, for example. Very practical use, right? Makes Mm-hmm. your job easier. You don't have to use simple templates from the web, for example. You've obviously created thumbnails at some point, right? I have never created thumbnails. I am as illiterate when it comes to this as possible. Thank you. Basically, thumbnails बनाने के लिए you have to have some kind of a background image or a background color. Then you add cutouts of the human beings who are going to be in the video, right? Mm-hmm. And if you add more modifications, like we have a very funky thumbnail going on today, तो उसके पीछे पहाड़, let's say हम हिमालय पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसके पीछे पहाड़ वगैरह लगाने पड़ेंगे, right? If I could already create the background in exactly the way I want, in the style I want, all I have to do then, obviously this software will develop as time goes on, is just find cutouts of my image and yours. मेरा आधा काम हो चुका है और उस पर बस मेरे को सुपर इम्पोज कर देनी है. So that saves me time. Interesting. So, in fact, in the long run, this might be a whole new business model where, as content creation and content consumption, it has already started in the United States of America. If you look at the numbers, right? See, I am more of a news and politics guy, so my base is Right. very very restricted to news and politics because that's my life, right? My podcast is also a news and politics podcast primarily. Like 80% of it is news podcasts, societal issues, policy, philosophy, and stuff like that. 20% of the times I try to go into the real world, which is where you boys are, and now. In this there could be a person who could come up with a software which will do stuff like this, where it would just be dedicated to YouTube thumbnails. Like I feed in the inputs and it churns out basically the most ideal thumbnail for a YouTube creator, and it eventually reduces the demand of even a thumbnail creator. You could just have an office where the person is generating thumbnails for 20 YouTubers on a daily Right. basis and charging them something of that sort, right? 100%. It can totally go there.
और इसके अंदर सिर्फ the only thing that will not change is the human part where I mean like I said again the input matters still because अगर हम भी क्या करते हैं let's typically talk about even like starting a podcast right one is आप बिल्कुल साइलो में आइसोलेटेड बिल्कुल बिना जाने तो आपको सिर्फ वर्ड पता है कि पॉडकास्ट होता है आपने शुरू कर दिया the other way to approach it is to go and look at the the covers of all the podcasts, listen to all the podcasts, see their sets, see their content, see their guests, right? So you have a huge data set and you're mining for what is approximately cool या common among all of them. And from there you sort of decide कि यार मैं ये वाला angle approach कर सकता हूँ और बनाता हूँ एक. Similarly, if a thumbnail editor is there, he's going to look at all the thumbnails that work on YouTube. He's going to match his training in graphic design with that. And उसके basis पे वो काम करेगा. The training period is too long if you're starting out, right? If you can cut that short because the machine can process it faster than you can, what really matters is then आप कितने अच्छे coder हो या कितने अच्छे input देने वाले हो. तो इस डाली के केस में particularly, it isn't so much about being a good coder. That's all in the backend software. पर आपको कितनी अच्छी तरह से specific instructions देने आते हैं. It's about the precision of speech. Because we did this thing where my friend was putting in inputs, but he wanted so much from the software. It's like a cat on a skateboard with an elephant. और वो सारा जंबल हो जाता था. It just all get fucked up. He wasn't using commas, he wasn't using semicolons, he wasn't specifying exactly what style to give. So constraints, like I said, would play a very important role in making all of this palatable or usable for people like us. Fair enough. Fair enough. Okay, I get it. See, good. This is why I like to chat with all of you boys because मेरे को कुछ नया सीखने को मिलता है. नहीं तो मैं तो अपने absurd little world में रहता हूँ जहाँ पे मुझे कुछ मालूम नहीं होता है. अच्छा चल अभी म्यूजिक की बात करते हैं. Now, this is the one place I believe people try to say that there is no objectivity in music. Honestly, I disagree with that. Sure. Music has objectivity, and अब आजकल म्यूजिक I can't consume today's music. There are very few songs that I can consume. I think it has become too electronic. Sure. Music, and here I say as a person who actually understands music, because मैंने ड्रमर था एक जमाने में, मेरे को आता था बजाना. Were अब you मैं thrash drummer, metal drummer? मेटल ड्रमर था और मेरे को म्यूजिक का शौक है. और now this is somewhere I actually have a genuine grouse against the current generation. They have diluted music. That this I say with full responsibility. मगर फिर भी मुझे बता आजकल म्यूजिक का सीन क्या चालू है, क्या हो रहा है आजकल म्यूजिक में, बताओ हमें. ठीक है, तो मैं आई एम गोना टेक दो तीन चीजों में से डिवाइड करता हूँ. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस, द फैक्ट दैट यू डू नॉट लाइक टुडेज जनरेशन की उन्होंने डाइल्यूट कर दिया. ठीक है, दिस इज अ क्लासिक. हर जनरेशन में जाके ये होता है. 70s नहीं फॉर रियल. अब 70s वाले रॉक को वो ब्लास्फेमी समझते हैं उनके बच्चे माँ बाप की, क्या बजा रहे हो, सेक्स ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल. 80s पंक को 60s वाले हिपीज दे सी इट एज लाइक इट्स अ डेसिक्रेशन ऑफ देयर पीस लव वाला मिशन, राइट. 90s का नायलिज्म को 80s डिस्को वाले प्रॉब्लमैटिक समझते हैं. अब 80s में आप पूरा सब समय कोक करोगे तो नायलिज्म तो आएगा ही ना, नेचुरल सी बात है. 2000s का like that post millennium haze is mistrusted by the 90s guys who think they're still the last bastion of pure rock, right? You move to the 2010s, pop music emerges. पहले भी था, but then rap भी आ गया और चीजें भी आ गई. मतलब I just took पहले मैंने rock वाला trajectory लिया था, and now we're here where it's very hard to understand contemporary rock सुनता भी कैसा है. Like because it's just stadium fill करने वाले दो तीन chords बजाने वाले bands basically, right? So this always happens. But there's this book called Retromania, which talks about how pop culture is obsessed with its own past. A lot of stuff. Jesse, what I'm wearing right now, Kushal, is 90s fashion. This is a loose t-shirt as compared to the t-shirt you're wearing, which is tighter here on the sleeves, right? तो अब क्या हो गया? We're moving back to a place where हम दोबारा से loose t-shirts लेके आ रहे हैं. A lot of the rappers are now adding elements of rock in their samples. As far as your grouse with electronic music is concerned, this is just a consequence of our attention spans and how we use music. So you are used to actively listening to music, where you will listen to an album from start to end, right? Now music has been relegated to background listening, passive listening, listening while doing other stuff. Okay. The other thing is, it requires
a great salesman and a great attention span to tell a group of friends कि सुनो अब हमें पूरी एल्बम सुनने वाले हैं. There is no longer that curiosity anymore. So in order to make it accessible to most people, it's come down to the beats. Can you follow the beat? Can you understand the groove? अगर हाँ तो तुम in हो. Otherwise, fuck it. Lyrics, one other sort of change that has happened is if you go to popular establishments in India, 5-star, 4-star establishments, you will slowly start to notice, unless वहाँ पे average age group 40 plus है, the background music has been changed from jazz, coffee jazz, New York jazz जो होता है, to deep house and techno that is easy to listen to. It's just a consequence of अब लोगों के पास time नहीं है. They just want something to, they use the word vibe to, as opposed to understand, because lyrics take a lot of energy and attention. So I'm not saying that they don't exist, because other Bollywood music is based on hooks and choruses जिसके अंदर बड़े lyrical होते हैं, बड़े rememberable होते हैं. But as far as the sort of attention span that people used to have to listen to music, that's gone now. My 8-year-old cousin only discovers music through reels and shorts. तो वो गाने भी सिर्फ 1 मिनट के गाने जानता है, क्योंकि रील्स और शॉर्ट्स 1 मिनट के होते हैं. तो वो भी कई बार रीमिक्स्ड होते हैं, राइट? पहले एक हिंदी गाना आएगा, फिर उसमें ड्रॉप आएगा, फिर इंग्लिश गाना आ जाएगा, और 1 ही मिनट हुआ है अभी. सो इज एंटायर म्यूजिकल हिस्ट्री is just 1 minute songs. So इसमें भी urban and tier 2, tier 3, tier 1 divide है, metro versus ये? No, because almost everyone watches YouTube shorts, and half the YouTube shorts have music in them. Because popular हो जाता है ना, आप कोई template, अगर कोई template है और उस template का part music है, and it's 1 minute, so you're gonna remember it, and then you're gonna start humming it. One of the biggest, you'll probably know this better than I do because you were in a band. The songs that become most popular are the most hummable, the most rememberable. जो मुश्किल गाने होते हैं, जो cult hits होते हैं, जैसे Bohemian Rhapsody, for example, Queen का, that's a tough song to remember, right? So that's why it's a cult hit many years on. जब वो आया था, maybe it didn't work so well, but something like Talking About My Generation, simple गाना है. Yeah, it's interesting, but I think in terms of quality, I don't know, objectively I just sound like music in the 60s I liked. I was not a 60s kid. I was primarily 80s and 90s kid, but yeah, I liked music of 60s and 70s. The many songs that you can objectively say are amazing, like whether it's Led Zeppelin or अरे हमारे म्यूजिक में भी, भारत के म्यूजिक में अगर हिंदी सिनेमा को देखो, हिंदी सिनेमा की जो Sona Mahapatra made a beautiful point कि how tuned our ears are in India to classical music thanks to Hindi cinema or Bollywood. Right. कि हमारे एवरेज लिसनर का कान क्लासिकल को ट्रेंड है. एवरेज लिसनर ऑफ इंडिया को क्लासिकल में एंड शी एक्सप्लेन्ड इट सो ब्यूटीफुली, क्योंकि उसने क्या बताया कि पावरोती के लिए एवरेज वेस्टर्नर ट्रेंड नहीं है. सो उनको क्या करना पड़ा, उनको डम डाउन करना पड़ा अपना म्यूजिक, सिंप्लीफाई करना पड़ा, और उनका पॉपुलर म्यूजिक बड़ा डम डाउन है उनके क्लासिकल म्यूजिक से. हमारा पॉपुलर म्यूजिक आज भी, अगर ऑनेस्ट आंसर चाहिए तो हिंदी सिनेमा इज आवर मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक. अगर यूट्यूब लैंडस्केप में भी देखेगा तो सबसे ज्यादा बड़े चैनल कौन से हैं? सबसे बड़े चैनल आज भी सारे तुम्हारे टी सीरीज, सारेगामा, हिंदी गाने म्यूजिक को डोमिनेट करते हैं. इंटरेस्टिंगली इंडिया में आज भी होप इसके लिए है, ऑल्दो हमारे करंट जनरेशन के म्यूजिक डायरेक्टर्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू डिस्ट्रॉय इट, एंड आई गिव देम गालियां फॉर दैट, बट स्टिल the market still demands that old school good tune classically trained sound जो आज आता है, और आज भी मास उसको सुन रहा है. तो वो एक होप है हमारे देश में. I tend to disagree here because बोलो क्यों? if you've listened to, चलो ये तो वो वाला हो गया scene. यार, let's talk about one of the biggest artists, right? Badshah. I mean, I had someone else on my podcast, Anshuman Sharma. He's a music producer. It's going to be out soon. And he was talking about how to make a Badshah beat in 6 minutes. And he broke down every Badshah song के अंदर जो common elements होते हैं, ठीक है? Musically भी,
And then he हाँ said with the lyrics, he specifically said ki you have to sound like a guy trying to get in a club and trying to like woo a girl, but you're also sad, right? हाँ That's basically bacha. मैं तेरे सामने आया फिर पार्टी में गया ऐसे से बात, like this is how हाँ bacha. इसको मैं बोलता हूँ कॉन्स्टिपेटेड साउंड. जो भी उसकी साउंड है, पॉइंट ये है कि वो ना, इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द टाइम्स. बिकॉज यू, आई मीन द चार्ट से इट, आप कितनी भी कोशिश कर लो, लोग ये सुनना चाहते हैं. देयर इज नो, आई मीन वी कैन ऑल सिट हियर एंड से कि यार आई एम नॉस्टैल्जिक फॉर द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द 70s, या रवि शंकर की बेटी अनुष्का शंकर भी क्या बढ़िया कंटेम्प्रेरी सितार बजा रही है ना. बट दैट्स अ वेरी स्मॉल सेगमेंट हाँ. ऑफ लिसनर्स. मेजोरिटी लोगों को ये नहीं सुनना है. अब क्या हो रहा है, अनदर थिंग दैट इज हैपनिंग इन व्हिच वी आर काइंड ऑफ लाइक डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, इज हम पुराने गाने, फॉर एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल इसका है केएल सहगल वाज अ ओल्ड सिंगर कंपोजर I ऑफ लाइक know. ओल्ड Yeah, I टाइम. know who is. I've listened to his उसका, entire list. या सो उसका गाना क्या कहते हैं, दिल्ली बेली नाम की पिक्चर में सबसे पहले आया था. उस कॉल्ड सैगल ब्लूज ओनली. दुनिया में प्यार बरसे और फिर ना जाने दिलिये क्यों तरसे, बट इट्स सेट टू लाइक अ डिचिक डिचिक वाली बीट, सो इट साउंड्स वेरी कूल. सेम विद हवा हवाई, खोया खोया चांद. देन सुशीला रामन डिड ये मेरा दीवानापन है, ऑल द वे टिल हियर नाउ, जहाँ पे बचना है हसीनों का, रणवीर सिंह वाला, रणवीर कपूर वाला वर्जन कुछ साल पहले. And then pretty much all the songs that you see right now, at least some of the popular ones, they're all remakes of older songs with newer beats. What does it say about the new generation that they can't create songs like that? Nay, it just says that it's a winning formula that executive, that producers will maul to death before they move on to something else. दोनों चीजें हो Could गई ना, be. क्योंकि परचेजिंग पावर तो माँ बाप के पास भी है ना, उनको भी जाना Hmm. है. They want, Hmm. it's like making two Indias meet age wise. मैं भी enjoy कर सकता हूँ, for example, अगर मैं indicative हूँ population का, and you can also enjoy it if you are indicative of the population. हाँ, इसका क्लासिक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ बटालवी का जो गाना लिखा हुआ था. इन केस पीपल डोंट नो हु बटालवी इज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ पंजाब, शिव कुमार Mm-hmm. बटालवी. वो कौन सी पिक्चर थी जो रिसेंटली आई थी, आलिया भट्ट की, जिसमें एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, वो हाईवे और पता नहीं जो भी, उड़ता पंजाब. पिक्चर नहीं. मैं उड़ता पंजाब थी शायद, मैं पिक्चरें नहीं देखता तो हम्म. मुझे कोई आइडिया नहीं है. तो उसमें वो गाना था बेसिकली, उन्होंने रॉक बैलेड रेंडिशन कर दिया उसको. अम, हम्म. ये जिसने ये गाना गाया ना, पटियाला पैग, वही सेम हाँ सिंगर हाँ. है. उसने ये गाना गाया, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत. तो अभी ये बटालवी इज अ ग्रेट पोएट, और बटालवी का जो मोस्ट फेमस रेंडिशन ऑफ हिज पोएट्री वो संग बाय महेंद्र कपूर. एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, गुम है गुम है गुम है. तो हाँ. उसका जो मॉडर्न रेंडिशन आया, आई thoroughly enjoyed it. I think they did a fantastic job making a modern rock rendition of that song of Shiv Kumar Batalvi, and that song was quite a big hit even in the young kids. I mean, at least I राइट. could hear it in many places. उसका नाम था शायद दोसांझ, दिलजीत दोसांझ ने गाना गाया दिलजीत था. दोसांझ. हाँ 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 हाँ, हाँ. दलजीत दोसांझ है शायद उसका नाम, वो जिसने वो या. पटियाला पैग गाना गाया हुआ है. तो है ऐसा. अभी जैसे पंजाबी म्यूजिक है, उसमें अभी डेफिनेटली आई विल एक्सेप्ट कि रैप और हिप हॉप का काफी ह्यूज इन्फ्लुएंस पंजाबी जॉनरा में आ गया है. उसका सबसे बड़ा या. एग्जांपल है मूसेवाला. सो मूसेवाला, बट अगेन दैट इज अ अच्छा, सेक्शन. हैव यू एवर लिसन टू कंटेम्पररी इंडियन रैप? हाँ हाँ, कभी सुना है? आई हैव दैट आई जैसे फॉलो. लाइक व्हाट आई आर्टिस्ट डोंट डू नो यू द फॉलो? नेम्स ऑफ आर्टिस्ट. आई डोंट नेम्स. मेरे को अच्छा. आजकल के कोई भी आर्टिस्ट का मेरे को नाम याद नहीं रहता, बिकॉज वो स्पॉटिफाई पे गाने आते जाते हैं और आप सुनते जाते हो. सी, हाँ. यू आर नो लॉन्गर अटैच टू द आर्टिस्ट एनी मोर, और द एल्बम एनी मोर, और द आर्ट एनी मोर. यूर जस्ट अटैच टू द साउंड नाउ. With contemporary artists, I have no attachment to them. With old That's why artists, that answers, yeah, that answers your dilution problem. Because we are a generation with streaming, we're streaming music. We're not hmm, buying music anymore. When you stream music, it's algorithmic. yeah. But in my case, see, the only reason I heard Musewala was because he was short and I had to do a podcast and I read a very detailed analysis of Punjabi music. I was doing this thing privately and personally at my own end. I was analyzing lyrics of Punjabi music, how casteist they were, and
etc, etc. And I was just doing my analysis. Not first of all, I don't care. They can spew casteism in their songs, they can spew misogyny in their songs. I mean, I'm a free speech absolutist. Jo karna hai karo, sanuki. That's not my Hmm. problem. But it was just an honest analysis. And then I came across this beautiful paper written by two girls, and I called them on the podcast. और उस चक्कर में मैंने मूसे वाले के सारे गाने सुन लिए. उसमें हो All क्या of गया, them, Kushal? सारे सुन लिए, सारे सुन लिए, सारे गाने उस बंदे ने जो बनाए मैंने सारे सुन लिए, सारे सुन लिए, सारे लिरिक्स पढ़ लिए. मैं बोला मूसे वाले में मेरे को अभी पीएचडी हो गई है. तो उसमें क्या हुआ, उस चक्कर में स्पॉटिफाई का जो एल्गोरिदम है ना, वो शुदाई हो गया हाँ. मेरा भी. उसको लगता है ये बंदे को सारे रैप सुनने हैं. तो वो चक्कर में वो सारे रैप बताता है. और अब मैं एक्चुअली सुन रहा हूँ. और लेट मी टेल यू, आई थिंक क्या होता है कि देखो, जॉनरा जो होता है ना, जॉनरा कई बार म्यूजिक लोग रियलाइज नहीं करते. म्यूजिक कई बार आवाज देने का बहुत अच्छा जरिया होता है. अब जैसे मूसेवाले का म्यूजिक है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि पंजाब में इतना ही बड़ा जॉनरा है. और ये मैंने नाम नहीं दिया, ये वो नाम देते हैं उसको. सो बिफोर समबडी ट्राइज टू से आई एम बीइंग कास्टिस्ट और एनीथिंग, नहीं, ये जॉनरा का नाम उन्होंने दिया हुआ है जो ये गाने गाते हैं. और उसका नाम है चमार रैप. ये उस कम्युनिटी से आते हैं जिसको ये अपने आप से नाम दे रहे हैं. एंड द I was so happy and proud to see them come up and create this music. And you know what? People might say, oh, rap is Western. Oh, who cares? These people are using a different kind of music to talk about what has happened to them in their society. And that was like, this is the beauty of music. Music can empower people. And it empowered people in different ways at different times. हमारे टाइम पे हमने दूसरे genres यूज किए अपने आप को पूरा करने के लिए. और रैप में आई थिंक a huge community of India sees that. And rap has become a voice of the Ravidasiya community in Punjab, the Ramgadiyas in Punjab, and it's a huge community. And obviously rap western nahi hai, African American hai, magar again the genre comes from the West, New York City, 70s, 80s, 90s. And most music in West is basically inspired by African Americans community. Right. It directly comes from the choirs where the African Americans used to sing in the churches. And most of your genres that come out of it, मतलब इसमें गोरों ने कुछ नहीं उखाड़ा. बेसिकली सारा अफ्रीकन का दिया हुआ है. गोरों ने बैरली कुछ उखाड़ा है इसमें. एल्विस भी बेसिकली रिप ऑफ था ग्रेट अफ्रीकन Yeah. आर्टिस्ट का. नॉट दैट आई It डोंट was लाइक एल्विस. bluegrass plus soul. उससे हाँ, बनाया था उसका blues. Yeah. Bluegrass was सो white though. That was white music. या दैट वाज वाइट म्यूजिक. मगर अगर उसको अगर उसके रूट्स में जाओगे, इंटरनली म्यूजिक के कॉर्ड्स कहाँ से डेवलप होते हैं, साउंड्स कहाँ से आते हैं, तो आपको पता चलेगा कि अफ्रीकन्स का इन्फ्लुएंस इनके म्यूजिक में भर भर के है. एंड गॉड ब्लेस दैट कम्युनिटी. दे आर एन अमेजिंग कम्युनिटी. क्या गाने बनाते हैं, क्या सेंस ऑफ बीट है, जबरदस्त लोग हैं. Right. मगर म्यूजिक की ये ब्यूटी है. और मैंने क्यों चमार रैप का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि that is something I was so happy to support as an Indian and as a activist also who talks about this issue a lot. I was so happy to hear it. मगर महाराष्ट्र में भी रैप सीन काफी है. आई नो वो गली बॉयज पिक्चर आई थी. फुल डिस्क्लोजर, मैं नहीं पिक्चरें देखता ये सब. मैं वैसे हिंदी सिनेमा को अवॉइड करता हूँ. आई जस्ट अवॉइड इट. मगर गली बॉयज में भी कुछ रैप आर्टिस्ट आए थे या कुछ आए थे. एंड आई एक्चुअली एम नॉट कंप्लेनिंग दैट these kids have taken up to rap. I have no problems with that. हर जनरेशन अपना करती है. जब हम ग्रो अप होते थे तो रॉक और मेटल काफी था. नाउ रॉक और मेटल की वो एक ही सीमा है, वो वहीं रह गया है, नॉर्थ ईस्ट में रह गया है, बैंगलोर के पब्स में रह गया है, और थोड़ा बहुत बॉम्बे में इक्का दुक्का जगहों पे रह गया. एंड आई एम फाइन विद इट. एवरीबडी हैज देयर Right. ओन राइट. लाइक इन माय ओन हाउस आई स्टिल लव ओल्ड हिंदी म्यूजिक because it is based on solid classical bass, and I love listening to that. And the ease with which आज भी हम किशोर कुमार को सुन सकते हैं, लता मंगेशकर को सुन सकते हैं. और ऐसा नहीं है कि यंग बच्चे नहीं सुनते हैं. I have seen young kids also listen to these songs. I mean, and but rap में yes, definitely there is a generation. I listen to rap, by the way. I enjoy rap. I enjoy hip hop. I think it's a great genre of music. I don't know what Indians have an issue with it. I think it's a great way to express yourself. Is it singing? I don't know. That I don't know about. I will not comment on. But it is a way of expressing yourself, and it is legitimate. And I will not beat kids down for saying, "Ye tum kya kar rahe ho?" because I myself consume it. Right. Right. Right.
As someone who has hundreds of rapper friends, I can tell you for a fact they take it very, very, very seriously. मतलब इससे पहले तो क्या होता था? It started off with just imitating कि भाई हम भी जैसे गली बॉय में हार्ड हैं या फिर दिल्ली में हम भी टफ हैं. But as the scene sort of progressed, it changed from that to यार हो सकता है मैं नहीं रहता गली में. Let's just admit कि मैं एक सेक्टर में रहता हूँ. Let's just admit कि मैं एक घर के अंदर रहता हूँ. Let's start from there. Let's not try to fake my struggle because again they were all inspired by struggle rap that they heard. फिर और जैसे यूएसए के अंदर भी रैप का एक्सपेंशन हुआ. मम्बल रैप केम, ग्लैम स्टाइल का रैप आ गया और तरह का रैप आ गया. People also changed. Now there's a party rap kind of thing happening. There's activist rap happening. There's angsty Delhi rap. There's romantic rap. There's Gujarati rap. There's Telugu rap. There's Bengali. इतने तरह का rap है, इतना बढ़िया बढ़िया rap है ना. I will admit some of it is very indulgent. Like these guys keep saying कि मैं आ गया हूँ scene में, मैं फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. Because the big other in their head is other rappers जो लोग cipher करते हैं या जो उनका बाप है जो मारता है But उन्हें, that's माँ very मारती है, जो भी कुछ unoriginal, है. don't you think? That is very Yeah. That's, unoriginal. I mean, that's my only qualm with this community is that they take an entire song to announce they're there. I mean, the fact if you're releasing a song already पता लग गया ना आप आ गए हो, right? So there's a lot of announcement culture that can largely be avoided. Uske beyond, there are some fantastic rappers who, me including, जैसे you listen to rap from the US. फिर वो बोलेगा मैं कॉम्पटन में हूँ, मैं जॉर्जिया के अंदर हूँ. आदमी इंडिया में बैठा है, वो रिलेट नहीं कर सकता उससे. मे बी कैन रिलेट विद लाइक ये लोग मुझे नीचे दिखाना चाहते हैं, मुझे गिराना चाहते हैं. द अदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट रैप इज, एंड यू विल नो बिकॉज यू बीन अ मेटल हेड, इज इट अलाउज फॉर अ catharsis around the feelings of rage, anger, vengeance, jealousy. ये बड़ी repressed feelings हैं that don't get that don't get any treatment in any popular music. But rap lyrics के माध्यम से आप वो भड़ास भी निकाल सकते हो. And like so you see rap gigs, you go, there are mosh pits, which is something that only happens in metal gigs. Only two Yeah. genres जहाँ पे ये चीज होती है. Metal और rap are similar in the way they both have mosh pits. There's there's gory content. Not all of it, but a lot of it. Because वहां पे कोई इंसान क्या क्या सीन छोड़ के क्या क्या स्ट्रगल करके आया. फॉर एग्जाम्पल, a lot of Delhi rap has a kind of assertive nature to it because of the hostility of living in Delhi. Because living in Delhi is just hostile in itself. तो ये सारा एंड इट्स अलाउड मी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर. कि मेरे को पता ही नहीं था कि यार ये एक्सप्रेशन की भी चीजें होती हैं, कि हाँ मेरे अंदर भी वो एक एंग्स्ट छुपी हुई है जो शायद निकल के आई रैप के माध्यम से. फिर कोई मुझे हिंदी में बोल रहा था वो बातें, कि जैसे सीधे मौत का एक लिरिक है, पहले से कर रहा था हसल जब पापा को लगता था बेटा ना समझ है. हाउ डू यू से यूर एन अंडरडॉग इन इंग्लिश? देयर इज 100 ways, but in Hindi there's only one, and they coined it. So Yeah. it's just ये इस तरह के कुछ टिप्पणियां हैं रैप के ऊपर. अच्छा है, करो करो, सब लोग करो. जिसको देखो, मेरा तो एक ही फंडा है कि जो भी नया आर्ट फॉर्म होता है उसको अडॉप्ट करो, मगर वो आर्ट फॉर्म के साथ, अभी जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ये बैंड है, मेटल बैंड है बाय द वे, रैप बैंड नहीं है ये. क्या नाम है इनका यार, की ना है होना था. हाँ, ये किथे गया, ब्लडी वुड. स्लिपनॉट, मेटालिका, नहीं, ब्लडी वुड. ब्लडी वुड. अरे यार ये पंजाबी बजाते हैं अपने में. मेरे पॉडकास्ट में मेरा हाँ दोस्त आया था फिंग, ही शोड मी अ क्लिप ऑफ देयर हाँ. कॉन्सर्ट. सो ये अच्छे हैं, ये अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं, अच्छा कुछ कर रहे हैं, मगर पॉइंट क्या है मालूम है? बियॉन्ड द पॉइंट जब मैं उनके लिरिक्स स्टडी करता हूँ, आई डोंट नो हाउ टू से दिस. देखो बहुत फर्क होता है. और इसके लिए यहाँ पे, और ये मैं पॉइंट देने वाला हूँ, शायद यंग बच्चों को बुरा लगेगा, मगर जो है सो है. तो मैंने स्टडी करो, जब टूपाक शकूर ने लिखा था, जब डॉक्टर ड्रे लिखता है, जब एम लिखता है, या चलो भले वो कम्युनिस्ट होंगे, रेज अगेंस्ट द मशीन, अल्ट्रा कम्युनिस्ट है, मैं उनसे रिलेट नहीं कर पाता हूँ, मगर मैं उनके लिरिक्स पढ़ता हूँ, वो दिल से कम्युनिस्ट हैं और वो अंदर से कम्युनिस्ट हैं. उनका जो आता है बाहर आता है. ठीक है. अब हमारे लोगों को मैं पढ़ता हूँ, देखो म्यूजिक बड़ा सीधे अच्छा मौत है, सुन के देखो, सीधे मौत सुन के देखो, यू विल चेंज योर म्यूजिक माइंड. मैं सुनता हूँ उनका, मगर मैं जब मैं पढ़ता हूँ ना हमारे आर्टिस्ट को, यार ओरिजिनलिटी कुछ नहीं है. तो आई डोंट नो कौन से हाउ टू आर्टिस्ट से. को कुशल? which artists?
मैं जो भी सुनता हूँ आजकल कंटेम्पररी म्यूजिक में, अभी जैसे मैं तो चलो मैं नाम लेता हूँ मूसेवाला, ठीक है, अभी हाँ ही इज डेड नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, या मूसेवाला का म्यूजिक था भाई, टूपाक और उनकी लड़ाई होती थी वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट की। हमने टूपाक और उसकी लड़ाई का कट कॉपी पेस्ट जॉब कर दिया इधर हमारे पंजाबी रैप कल्चर में, ठीक है। अभी हम भी बीफ, साडे भी बीफ होंदे ने, और की बीफ है ਤੁਹਾਡਾ, मतलब बी ओरिजिनल एटलीस्ट, हाँ बी नहीं यार ओरिजिनल। मैटर हो जाते हैं दे वी कॉल इट मैटर हियर इन दिल्ली मैटर हो गया ब्रो सीन हो गया ये ना लुक वेयर इज इट इज सेंट्रल टू रैप टू फाइट यू कांट जस्ट रैप इट यू कांट रैप इनटू अ वोर्टेक्स खाली ऐसे ही वॉइड में मतलब कुछ वो देयर हैज टू बी सेंट्रल टेंशन and it's very helpful if it's between two neighborhoods. If it's you versus society वो भी बढ़िया है, if it's you versus बाप वो भी बढ़िया है, if it's you versus माँ वो भी बढ़िया है, if it's you versus your ex वो भी बढ़िया है. There has to be central tension. अब यार वो कॉम्पटन से निकला है, it's original, it's dated, so you enjoy it. अभी ये वाला music when this becomes something that kids from 2040 listen to, they're like यार ये भी same चीज है. Which is why I said pop culture is obsessed with its past. That's the premise I'm playing on. बड़ा easy I हो don't know जाता if है it's ऐसे. obsession. It's a very objective way of looking at the world. There is nothing original in what you're saying because you come from, you don't, well, look at Musewala's past. He doesn't come from atrocity. He comes from a dominant caste in his society. He comes from a family that was very middle class and very settled, and there was no real. I mean, you can look at his past. See, where is the anger coming from? Where is the, see, the anger in the case of, let's say, a Biggie Smalls comes from real atrocity, comes from real problems. क्या problem है? तू तो साले फ्लैट में रह रहा है. क्या problem नहीं क्या है ये तेरी बात लाइफ? मैं मानता हूँ a lot of it is unjustified totally which is why when It's say you're a wannabeism. The yeah difference is it's वो wannabeism. चीज है but then there is a whole sect of rap which is acknowledged that and said कि bro हम तो पार्टी कर रहे हैं and that also works पर कहीं कहीं पे जगह So पे genuine let's angst be है honest, na. See, that is why I have respect for Chamar rap. That is yeah coming from a place of real pain. That is coming, and you know what the irony is? You listen to the lyrics of artists of Chamar rap. क्या रैप के लिरिक्स हैं? वीडियो में उधर भी लड़का हमर में आ रहा है, हमर से उतरता है, हमर को साइड में पार्क करता है, अंबेडकर को नमस्ते करता है, जाके पढ़ाई करता है. लुक एट द आयरनी ऑफ लाइफ. वो बच्चा बोलता है मैं तो पढ़ाई करूंगा, मैं झगड़े नहीं करूंगा, मैं इन सबको दिखाऊंगा मैं भी ऊपर आ सकता हूं लाइफ में. और यहाँ पे आ जाओ इस जॉनरा में, जो जेट सीक जॉनरा है, मैं तो नाम लेके करता हूँ कास्ट का, जेट सीक जॉनरा है. बाकी जट्टा दा ए ते जट्टी दा ओ तो पता नहीं ए ते ओ brag वही. it's bragging हाँ, about who they are वो yeah क्या है, वो एस्टेब्लिश्ड है सोसाइटल हायरकी में. तो दे आर मेकिंग बीफ्स अप. द रियल ऑप्रेस्ड क्लास इज नॉट मेकिंग बीफ्स अप. And that's where right the authenticity of a Tupac and a Biggie Smalls used to come. They used to come. अभी रॉक में क्या होता था? रॉक में तो वो डिप्रेस्ड होते थे बेसिकली. मैं गोली मार देंगा खुद नू. That was, yeah, रॉक में होता था ये कम्युनिस्ट एलिमेंट, रेज अगेंस्ट द मशीन वाला, राइट? वो the बोलते man थे who कि, sold the world और ये सब, या रेज अगेंस्ट मशीन का वो सबसे फेमस लाइन आज भी लोग जो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, वो फक यू आई वोंट डू व्हाट यू टेल मी, फक यू आई वोंट डू व्हाट यू टेल मी. वो बेसिकली था एक रिबेलियस मोड था उनका. सो आई right कैन अंडरस्टैंड. व्हाट आई कांट रिलेट इज विद metro living Indian kids who have a very middle and upper middle class upbringing, trying to pretend they are struggling. You are not. Do what you are. That I will respect a lot. That's what I'm trying to say. आई एग्री विद यू मैं इसमें बिल्कुल भी मेरी डिसएग्रीमेंट नहीं है मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज देर आर सो गली गैंग एंटरटेनमेंट इज नाउ फुल फ्लेज्ड लेबल इससे पहले वो सिर्फ रैपर्स गली से थे राइट आई मीन बिजनेस इज फॉर्म अराउंड इट राइट इट्स अ होल इंडस्ट्री नाउ वो बात है बट फॉर एग्जांपल लेट मी टेक यू टू समथिंग एल्स आई नो समवन हिज नेम इज लिल कबीर ही इज अ रैपर Wow. and he's made a song with another artist who I know whose name is Karun. It's called Very good. Anant. करुण sings the verse जीवन अनंत है जीवन अनंत है इस बात में सच है जीवन अनंत है and then Kabir sings the darkest verse ever known to Hindi rap. It's about a powerless boy in Kanpur कि वो क्या करेगा जिस दिन उसको पावर मिल जाएगी. It's dark, it's borderline serial killerish, but it's so powerful तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. There's Very that as good. well.
Very good. And these boys should be promoted, and these boys should be given as much shine and light as possible. See, I can always respect an original thought. I can never respect wannabeism, which is my biggest grouse with pop culture as a genre. Pop culture as a genre and pop culture as a larger subset was always based. Look, always remember, there is a dominant culture and there is a subservient culture. ये right, दुनिया का दस्तूर है. So Indian pop culture is dominated by Western pop culture. Now, if in that comes an original artist that talks about rootedness, talks about their real life issues, talks about real world emotions. Now, you can come back to me and say, but Kushal भैया, अब अगर वो है मिडिल क्लास, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, और उसकी प्रॉब्लम यही है कि उसके बाजू वाले फ्लैट में लाइट चली गई है और वो उसके बारे में गाना क्यों नहीं लिख सकता है? Fair enough. I will take that वो point लिखते हैं, with. वो लिखते हैं, and people acknowledge that, people listen to that in huge numbers. So basically अभी एक और क्या है मालूम है, और ये अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा कि what if people don't care about the lyrics and they just care about the music? Agreed. One of the biggest reasons, I mean, मैं आज भी ब्लैक मेटल कभी कभी सुनता हूँ. पहली बात, प्लीज उसके लिरिक्स नहीं पढ़ लेना, मतलब पता नहीं उनको क्या हो गया है, वो थोड़े शुदाई से हो गए हैं. मगर मैं आज भी क्यों सुनता हूँ ब्लैक मेटल इज, मुझे आज भी उनकी ड्रमिंग बहुत अच्छी लगती है. तो आई लिटरली ट्यून आउट द लिरिक्स फ्रॉम माई ब्रेन. अरे बेस्ट पार्ट क्या होता Right. है, वो क्या बोल रहे हैं वैसे ही समझ नहीं पड़ता है, मेटल का कॉन्सेप्ट करके वो है बोलते ही, हैं. मतलब हाँ, वो क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आता. तो इतना अच्छा है कि मेरा ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको ट्यून आउट कर देता है, और मैं सिर्फ ड्रम्स, स्पीड ड्रमिंग को सुन रहा हूँ, मजा आ रहा है. एज अ ड्रमर सुन के मजा आता है, हाँ क्या ड्रम्स बजा रहा है, क्या ड्रम्स बजा रहा है. सो आई गेट ऑल ऑफ दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक there is a lot of defensiveness when it comes to critical analysis of music also. अरे भाई, yeah, if you can enjoy things unabashedly, people can critique them also ना. It should be a two-way street. And I see वो थोड़ा कई बार लोगों को लगता नहीं, how can you say that. जैसे वो ना विराट कोहली के फैंस होते हैं, बड़े टची होते हैं. विराट कोहली के बारे में कुछ बोल दिया ना तो उनको बड़ा ऐसे इधर लगता है, क्योंकि उनको उनकी इधर. आइडेंटिटी है ना, मैं विराट कोहली का फैन हूँ, so it's so easy to impinge on it. ऐसे थोड़ा ना होता है कि विराट कोहली के फैन की आइडेंटिटी हो गई. और क्या, do you not know this is a whole thing? ये with Sushant Singh Rajput, same concept. There's a whole community called SSRians online. शर्म आनी चाहिए मतलब हमारे देश को. they need SSRIs. I really think that. तो मेरे को, मैंने ये ऐसे जोक बनाया था, SSRians need SSRIs because वो तो अभी तो ट्विटर स्पेसेस पे थोड़ी देर टाइम पहले तक बंद हुआ है, but there used to be a whole Twitter Spaces room that I would just go for fun. वहां पे ना, वो सुशांत ने कल मुझसे बात करी थी, मुझे उसकी आत्मा दिख रही है, सुशांत मुझसे ये कह रहा है, वो कह रहा है. There's not one fake clairvoyant, there's several fake clairvoyants. सभी बात कर रहे हैं, सभी मीडिया में, सभी साइकिक हैं, सुशांत से बात कर रहे हैं. मतलब ये तुम मजाक कर रहा है, ये सीरियस है, लोग एक्चुअली ऐसी I'm हरकतें being कर रहे हैं. serious, bro. I'm being dead serious. So someone's death makes a temporary क्या कहते हैं, void in the pop culture, जो लोग भर लेते हैं उसे वो बन के, right? कि हम तो यही हैं. वो लॉबी चल जाती है कुछ समय तक रेलेवेंस की. वो दे कैन एक्ट एज एन इंटरनेट मॉब, कि जहां पे भी सुशांत का जिक्र हो रहा है, अरे यार सुशांत कह रहे हैं, वहां बात हो रही, चलो वहां जाके बोलते हैं, hey, सुशांत के लिए कुछ मत कहना. That's a real thing. There's a real online SSRian mob. You can look it up. You look कि up SSRIANS and you'll find a huge number of मुझे तो posts. लगता था सिर्फ वो जो एक वो लॉयर है, क्या नाम है उसका, सिर्फ वही मजाक लगा रखा है उसने. क्या नाम था यार उसका, नहीं, वो हजारों लॉयर है की जो संख्या में. ऊट पटांग वीडियोस बनाता है, अजीब अजीब किस्म के वीडियोस बनाता है, और ट्विटर पे है. वो क्या नाम था यार उसका, वो दिल्ली से ही है वो लॉयर. वो एसएसआरियन है, वो एसएसआरियन ऑन स्टेरॉइड्स है वो. हाँ, तो ये रियल फिनोमेना है बहुत. ये ऐसा हो जाता है. I mean, this is the nature of Indian विभोर, internet. You विभोर tell me. याद आ गया नाम मुझे हम्म. उसका, विभोर. अरे उसको तो मैं जाके एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ, मेरे को इतना मजा आता है उसको देख के, क्या क्या बातें करता है वो. Like, तो you are followed by several people on the non-left. मैं ये भी देखता हूँ, 16-17 साल के बच्चे हैं. मैं एक बच्चे से शादी में मिला, तो मैंने कहा यार क्या सीन है, कह रहा भाई मेरे को तो मोदी पसंद है. मैंने कहा अच्छा, क्या एज है तेरी, 16-17 साल. तो मैंने कहा अच्छा, तो तूने, कहता मैं किस किस को देखता है. सो यू मेंशन ऑल द इंडिक राइट विंग नेम्स. अच्छा, मैंने कहा ठीक है, ये यूट्यूब के अंदर गया है तभी ये सबको, इन सब लोगों को देखता है, फेयर. एंड आई आस्क्ड कि लेफ्ट पे,
कह रहा वो तो चूतिए हैं, लेफ्टिस्ट चूतिए होते हैं लेफ्टिस्ट। तो मैंने कहा अच्छा, ये मतलब ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऐसे हो रहा है कि जो 16 साल का बच्चा है वो ऑलरेडी अज्यूम कर रहा है इंटरनेट पे देख के अपने एल्गोरिथम के माध्यम से कि लेफ्टिस्ट चूतिए हैं, सारी चूतिए हैं, उनकी तो बात भी नहीं सुननी। हाँ ये That's also one नहीं, problem with चल online अब communities. इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो तूने मुझे वो YouTube का रिसर्च टैब बताया था, ठीक है? हाँ, मुझे तो उसके बारे में YouTube का रिसर्च टैब भी नहीं मालूम था, तूने मेरे को बताया, बोला भैया ये भी देख लो गलती से कभी कभी। तो जी हाँ, मैं अपने लिए तो उसको नहीं देख रहा हूँ, मगर मैं YouTube क्या कर रहा है उसको स्टडी कर रहा हूँ। और मैंने ये थोड़े दिन पहले दूसरी पॉडकास्ट में भी अपनी बोला था, ये अभिजीत के साथ, मैं और अभिजीत जब हाँ, बात कर रहे थे उसका ट्विटर का जो केस चालू है, भाई ये है ना बड़ा सीरियस इशू है। सो ना, ये एल्गोरिथमिक जो वर्ल्ड्स क्रिएट होते हैं, जो एल्गोरिथमिक एको चेम्बर्स क्रिएट होते हैं, ये बहुत ही विचित्र किस्म का वर्ल्ड है। तो देर, और again my research and my content analysis is strictly based to the genre I stick to, which is loosely called news and politics. So I right. am not extrapolating it and saying that YouTube does this everywhere. No, but in the news and politics genre, and let me tell you, people should take this very seriously, because your policies are downstream from this genre. Your life is downstream from this genre. Because Hmm. politicians are in this genre and they are the most powerful people in your society. Bureaucrats, politicians, they are the people who decide your destiny as a country. Nobody else does. So let's be very clear. और यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर आर टू वर्ल्ड्स। एक है जो इंग्लिश लैंग्वेज पॉडकास्ट है, जो जिसमें मैं हूं, वो जॉनरा है। यहाँ पे अगर आप यूट्यूब का एल्गोरिदम स्टडी करोगे ना, फुल लेफ्ट विंग, फुल वोक ऑन स्टेरॉइड्स बाय द वे। यहाँ पे मतलब यूएसए। यूएस से यहाँ पे आ रहा है ना इंडिया में। यहाँ इंडिया में जो यूट्यूब आपको अगर अपना कंटेंट प्रमोट करना है, ठीक है, देखो सारा खेला क्या है, आप एट द एंड ऑफ द डे आप कंटेंट क्यों बनाते हो? क्योंकि लोग आपको सुने। अब आपको लोग सुनेंगे तो ही आपका कंटेंट आएगा। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इंग्लिश में अगर आपको आगे जाना है तो आपको एक सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट करना है। अभी लोग मेरे को बोलेंगे नहीं मगर ध्रुव राठी एंटी बीजेपी हिंदी में है, बड़ा हो रहा है। आप ध्रुव राठी की ग्रोथ स्टडी करो, अभी उसकी ग्रोथ स्टैग्नेट हो रही है। आप आकाश बनर्जी की ग्रोथ स्टडी करो, अभी ग्रोथ स्टैग्नेट हो रही है। He's moved इंडिया, to vlogging now. वो हाँ तो he's using other channels, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर रहा है। हाँ तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जब मैं घुसा पूरा, तो मैं पूरा अंदर घुसा इसमें, मैं स्टडी कर रहा था कर क्या रहे। और आप अभी अगर यूट्यूब को स्टडी करो, यूट्यूब में अगर आप हिंदी में गए, पूरा राइट विंग कंटेंट है पूरा। All of it. और ऑल ऑफ इट ही, और बहुत डिस डिस डिसकंसर्टिंग वे में जो कंटेंट आ रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे नाम लेना पसंद नहीं है। इट्स नॉट नाइस। सम ऑफ द कंटेंट इज एक्सट्रीमली बिगेटेड ऑल्सो एट टाइम्स। और Hmm. यूट्यूब दबा के, यूट्यूब है ना, यूट्यूब जैकल एंड हाइड है इस समय। जैकल एंड हाइड गेम खेल रहे हैं। इंग्लिश में Do you think एक है, YouTube is actually using, मतलब YouTube deliberately कर रहा है, और is it just वो the मेरे desire of the users? डिजायर ऑफ द यूजर्स एक हो सकता है, मगर यूट्यूब उसको रोक भी नहीं रहा है, ये भी हो रहा है। ये दोनों और है। वो तो आपकी मशहूर मशहूर फ्री स्पीच टेरिटरी में आ गया फिर, बिल्कुल। कि वो और देखना चाह रहे हैं। तो मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ यूट्यूब बंद करे, प्राइवेट कंपनी है, उसको हाँ, जो करना है करे। मैं ये कह रहा हूँ यूट्यूब कर रहा है। मैं तो सिर्फ देखो, मेरा क्या सिंपल है, मैं तो झंडा लेके, मैं सिर्फ ऐसा एक छोटा सा झंडा लेता हूँ जिसमें रेड फ्लैग डालता हूँ, और फिर मैं ऐसे रेड फ्लैग घुमाता हूँ कि देख लो ये हो रहा है। बाकी जिसको हाँ, जो करना है करे। मैं तो फियर्स इंडिविजुअलिस्ट हूँ, सानू की। मैं इवेंचुअली आई मूव ऑन फ्रॉम, बट right. this is happening. There is a particular way content is being consumed, and the right wing Hindi content is the thing on YouTube. I know। मतलब आपको बड़ा सिंपल है, आपको बड़ा यूट्यूबर बनना है आज, आप उठाओ जी, Hmm. आप 4-5 गालियां दे दो एक कम्युनिटी को पर्टिकुलर, और आप बता दो हिंदू खतरे में है, और खत्म हो गई बात। आपका कंटेंट हो गया काम, आपका कंटेंट हो गया, आप आगे बढ़ गए लाइफ में। ये एक तरीका है करने को। इंग्लिश में आप कंप्लीटली उल्टा कर दो, आप हिंदुओं को गाली दे दो और बोलो मुसलमान खतरे में है, और वहां पे एक किस्म का ऑडियंस है। मगर डेफिनेटली द हिट्स आर डिस्प्रोपोर्शनेटली मोर ऑन वन साइड एंड डिस्प्रोपोर्शनेटली लेस ऑन वन साइड।
बट ठीक है, सबकी दुकान चल रही है, सब बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इससे आपको एक्चुअली में दुनिया का हो रहा क्या पता चलता है। जैसे वन ऑफ द मोर लेजिटिमेट बेसिस ऑफ एक्सट्रैपोलेटिंग व्हाट पीपल आर लुकिंग इन सोसाइटी इज थ्रू गूगल सर्चेस। I believe the next thing that people are going to extrapolate is what's happening is going to be through YouTube searches, because it's the second largest search engine of the world. करेक्ट। YouTube is primarily used as a search engine, whether we like it or not. They use it as a search engine. लोग उसको कंटेंट के लिए नहीं यूज करते, सर्च इंजन करके यूज करते हैं कि भैया हमको तो यू नो ये है। मगर चल यार, अभी क्वेश्चन लेता हूँ। एक बंदे ने तुझे क्वेश्चन पूछा है, vlogging, how do you find the difference where people were hooked to 30-minute sitcoms, but now vloggers like SJFP filled the gap where people prefer to watch vloggers over sitcoms? ये पहला क्वेश्चन है, बता। अच्छा, so I haven't seen SJFP, but I can comment on it simply. मेरी अपनी दादी is a byproduct of this. She was a big time serial watcher, all serials. मतलब मैं नहीं कह रहा American sitcoms, Friends type के जो वो hogwash होता है 90s का, जो हम वर्शिप करते हैं कि भाई 90s का अमेरिकन कल्चर अब देख रहे हैं फ्रेंड्स वगैरह देख के। नॉट दैट, जो इंडियन सिटकॉम्स होते हैं, आई कैन कमेंट ऑन दैट। शी इज वॉच दो, शी इज वॉच सोप ऑपराज, शी इज वॉच बिग बॉस, शी इज मूव्ड फुल टाइम टू व्लॉगिंग। आई एम नॉट श्योर SJFP क्या करता है, बट शी वॉचेस फैमिली व्लॉग्स। नाना जेठानी क्या कह रही है एक दूसरे को, घर में खाना बन रहा है, आर इसने मुझे ऐसे कह दिया, हमारी यूट्यूब से इतनी इनकम आई है। इट इज ड्रामा for short, because but it's real drama. It's a sort of voyeurism you would never get in a sitcom. इतना डीप वॉयरिज्म की आदत पड़ गई है कि उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। फिर तो आप चाहते हो किसी के घर के अंदर मैं बैठ जाऊं सीधा। मेरे तो को आप जब जीरो आइडिया सिटकॉम इसके के बारे अंदर, में। हाँ क्या चीज? नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैंने कोई नहीं देखा व्लॉगर, सो आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी यू आर एक्सप्लेनिंग दिस। Yeah, because sitcom is still curated. There's a story, there are characters, there are canned laughs, right? There's a plot going on. In vlogs, sure वो बोलते हैं हमारा ये premise है, एक काम करते हैं, आज ना हम एक amusement park चलते हैं, but वहाँ जो भी होता है, even if you try to manufacture a spectacle, all of it is real. फिर क्या होता है, आप एक constant camera लगा दो एक family के अंदर, जहाँ पे equation सारी same है, and after a while you kind of start living with the camera, right? Pehle you after a few months or weeks you get over your self consciousness, but your equations still remain the same. उस चीज को एक्सपीरियंस कर पाना बहुत रियल है। सिटकॉम एक डिग्री ऑफ, मतलब 4-5 कॉमेडी राइटर्स बैठे हैं, 4-5 ऐसे ये लो रेजोल्यूशन CID बनाने वाले राइटर्स बैठे हैं, वर्सेस अब जैसे सेम चीज लाइक व्लॉग एग्जांपल है, दिस गाय कॉल्ड बॉबी कटारिया दैट आई थिंक यू विल एंजॉय। He was mentioned in comedian Manik Bhana's special as someone who legit went up to police and said कि देखो पुलिस दारू पी रही है। तो वो क्या करता है, वो एक तरह का समाज सेवी kind of like, I mean, he's complicated because he also दैट्स इंटरेस्टिंग। takes money sometimes from people. वो क्या करता है, वो legit कोई भी चीज कर रहा है। अच्छा आप सोचो, वो एक विजिलेंटी है बेसिकली, he's like a bad vigilante, right? वो लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर देता है फेसबुक पे, वो किसी को डेड बॉडी को उठा रहा है, हॉस्पिटल लेके जा रहा है, लाइव स्ट्रीम कर रहा है कि मैं यहाँ मदद करने आया हूँ, ये करने आया हूँ। इट गेट्स डार्क कुशल, इट गेट्स डार्क। बट आपको उस लेवल की वॉयरिज्म की आदत पड़ जाएगी ना, जब आपको सावधान इंडिया खोखला लगेगा, कांट गो बैक। ओए होए, सावधान इंडिया का नाम ना ले, मेरी वाइफ उसको देखती है, मेरी जिंदगी बर्बाद हुई पड़ी हुई है। इट्स सच अ लो रेजोल्यूशन शो ब्रो। अरे हाय हाय, मेरी वाइफ, और उसका क्या होता है, वो सावधान इंडिया देखती है और फिर उसके अंदर का कैनेडियन जागता है और मेरे को बोलती है देख तेरे देश में क्या हो रहा है। मैंने सत्यानाश हो। देयर अ पॉइंट व्हेन आई यूज्ड टू, अभी शुक्र है नहीं देखती है। मैं वो फैक्ट्री से आता था काम करके, मेरे को याद होता, मैं लिटरली 2-3 बार तो मेरे दिमाग में आया कसम से, अगर उसने सावधान इंडिया देखा होगा, मर गया आज मैं, फिर से मेरे को क्वेश्चन पूछेगी इंडिया के बारे में। यार आपको बहुत ही अल्ट्रा पैरानॉइड बना देते हैं वो वाले शोज। लाइक दिस इज आल्सो द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट पीपल डोंट रियलाइज। इट्स ऑल फन एंड गेम्स व्हेन यू वॉच इट वंस, व्हेन इट्स अ हैबिट और आप में डर का माहौल बिठाया जा रहा है। जैसे वो सनसनी वाला आता था बंदा, कर चैन से सोना है तो जाग जाओ, सनसनी, वो जो दाढ़ी वाला बंदा आता था, दैट गाय। उसको रात पूरा को देख के कॉन्सेप्ट आदमी डर ही जाए। कि बहनचोद डरे रहो, डर डर की उसमें जियो, तुम्हारी जिंदगी में डर ही डर है, कभी भी वारदात हो सकती है। मेरे घर वाले कहते हैं जमाना खराब है, कब से? मतलब मैं जब 16 साल का तब भी जमाना खराब था, 25 साल का तब भी जमाना खराब है। अरे बाहर मत जाओ, जमाना खराब है, जमाना हमेशा ही खराब रहेगा।
I genuinely believe a lot of this is propagated by, you know, ये जिस तरह के shows आते हैं crime वगैरह वाले, उससे बड़ी तो vloggers हैं. At least दिखा रहा है कि भाई जमाना ये है, legit real जमाना देख ले, ये है. It's just weird. अच्छा चलो, दूसरा बंदे ने क्वेश्चन पूछा है. क्वेश्चन हम दोनों के लिए था, मगर पहला वाला मैं आंसर नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो अपने ककून में रहता हूँ. There are subtle political messaging in many songs, in some songs, and Bollywood too had songs like the one in Rockstar, apparently. Example दिया है साडा हक एथे रख, which had political हाँ, messaging. Do you think future singers will use music to share their political grievances? Hello, मैं पहले आंसर करता हूँ. please. Music had always got political messaging. Have you heard the lyrics of old school Marxists in Hindi cinema? कभी किसी ने एक की मैं झूठ बोलिया वो गाने के लिरिक्स कभी एनालाइज किए हैं कि आई मीन आई लव दैट सॉन्ग बाय द वे. आई एम नॉट सेइंग कि वो सॉन्ग गलत ट्यून है या नहीं होना चाहिए. कि मैं रुको, मैं तुम लोगों को है ना वो मैं तुमको लिरिक्स पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है? कि मैं झूठ बोलिया लिरिक्स के क्या थे. वो लिरिक्स अगर कोई शांति से उनको एनालाइज करे, ऐसा लगता है कार्ल मार्क्स के चचेरे भाई ने वो लिरिक्स लिखे हुए हैं. कि वो क्या है कि वो लिखा हुआ है, वो एवी दुनिया देवी दुहाई झूठा पौंदे शोर हो अपने दिल को पूछे वेखो कौन है नहीं है चोर. तेकी मैं झूठ बोलिया कोई ना, तेकी मैं कुफर तोलिया कोई ना. ठीक है, उसके हाँ, उसका एक पर्टिकुलर लाइन मेरे को याद था कि हो देखे पंडित ज्ञानी ध्यानी हो देखे पंडित ज्ञानी ध्यानी दया धर्म दे बंदे राम नाम जद्दे केंदे गौशाला दे चंदे ते कि मैं झूठ बोलिया. इससे बड़ा सोशल मैसेजिंग हो सकती है? ये क्या है? ये एक मार्क्सिस्ट है जो उस टाइम के अपने, और ये गाना कब लिखा गया था, ये लिरिक्स कब लिखे गए थे? ये पिक्चर है जागते रहो, ये गाना गाया है मोहम्मद रफी ने. ये गाना है 1956 में शायद, इफ आई रिमेम्बर. तो यार म्यूजिक तो हमेशा से पॉलिटिकल और सोशल मैसेजिंग करता था. आपने कोई नया डिस्कवरी की है? ये भी भाई कमाल है. हाँ, नहीं नहीं, ये तो दिस इज द बेडरॉक ऑफ म्यूजिक. मतलब पहले तो बोर होते हुए करते थे, उसके बाद इट्स म्यूजिक हैज बीन प्रोटेस्ट ऑल द टाइम. माय फ्रेंड सुमित रॉय हैज अ बैंड कॉल्ड रोल्स रॉयस. दे हैव अ वंडरफुल सॉन्ग कॉल्ड पूर्ण स्वराज. उसके लिटिल कोरस यही है: पूर्ण स्वराज पर शब्दों पे लाठी क्यों, किस्ता हयात में लिखने से डरो क्यों, पूर्ण स्वराज सवालों पे क्यों हो बवाल, क्या यही है अच्छे दिन. वेरी गुड. मतलब बेसिकली इट्स अ स्लाई ऑन मोदी विच इज अप्रिशिएटेड. हाँ, मतलब ऑब्वियसली पूर्ण स्वराज, उस लड़के को मैं जवाब दूंगा कि जो भी बंदा मांगता है पूर्ण स्वराज वो है गधा. क्योंकि पूर्ण स्वराज का मतलब होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और तुम उल्लू के पट्टों को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए. शट अप एंड गो सिट इन द कॉर्नर. ये मेरा जवाब अब यार होगा अब उसको. अब इसका इसका लिटिल एग्जांपल अगर हम लिटिल मीनिंग लेंगे तो उसको क्रिटिक एनालिसिस स्कॉलरली, ये आर्ट है, इसको लिटरली थोड़ी एनालिसिस कर हाँ, सकते तो हैं इसको. मैं क्या करूंगा अभी, कोई ओए राइट विंग आर्टिस्ट हो, उनको बोलो पूर्ण स्वराज का रिप्लाई करो अपने स्टाइल में. मगर पूर्ण स्वराज का मतलब होता है तुम डायरेक्ट बीफ करा रहे हो डेमोक्रेसी. ब्रो, यू आर लेजिट कॉजिंग अ वेरी बीफ. गुड. मैं तो कांडी लगा रहा हूं इधर. राइट विंग आर्टिस्ट गो अटैक पूर्ण स्वराज बिकॉज इट इज वन ऑफ द वर्स्ट political ideologies that could ever come. See, माय the गॉड, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. it's okay. I mean, your friend has bad ideas. He must be a good kid. Your friend has bad ideas. I'm just shitting on his ideas. It's a I'm not great song, shitting you on should him. check it out. I'll send it to No, you. song acha. I mean, I'm telling you, they're like Rage Against the Machine. Yeah, I love their music. What shitty Yeah. lyrics! I mean, freaking communists. I love Rage Against the Machine. I love them. I still till date, I believe that why music is always like that is because music has inherently based itself on an oppositional mindset, right? It's very hard to say law and order based society awesome. It's very hard to say that, right? So The you just only like, equivalent is the Delhi police jingle, which says Delhi police, Delhi police. That's it. so that's the problem. So I totally understand why music is always oppositional. But the point is, while you enjoy the music, kids, don't take it seriously. Which is why all young kids see music is always, see how people's habits and music consumption patterns change. You listen to very oppositional
ragey music as a kid. And then it's a natural biological process. As we grow older, the testosterone levels in our body reduce. It's a biological process. And then what happens when you turn 25, 26, go into your 30s? Life happens. And then you realize, ओ यार कैपिटलिज्म तो बड़ा अच्छा है For इससे तो sure. सब कुछ चलता है. ये कौन पागल कम्युनिस्ट है जो ये गाने लिख रहे थे, इन्होंने तो हमारी टट्टी कर रखी है. नहीं नहीं, गाना सुनो, लिरिक्स को. See, I literally know everyone, that includes me, who loved Rage Against the Machine. I wanted to break the world, I wanted to do everything. And then when I turned 30, I was like, ये पागल है मगर गाना बहुत अच्छा है. So That's true. everybody goes through that phase. Everybody, and music by nature is always going to be like that. It's just that some people, which is unique to Hindi lyricists, who remained Marxists and committed Marxists for life till the age of 60s. Like उनको क्या होता है मुझे नहीं मालूम, जो Marxist for life रहते हैं, वो यूनिक ब्रीड है. वो यूनिक ब्रीड होती है जो जिंदगी भर ऑपोजिशनल मोड में रहते हैं, ऑपोजिशनल और रेवोल्यूशनरी मोड में रहते हैं. आई डोंट गेट दैट. मरिया, Yeah. Purna Swaraj sounds very sexy. But what does Purna Swaraj mean? Like, I have read two versions of Purna Swaraj. One is Mahatma Gandhi's version and one is Arvind Kejriwal's version. Okay. Mahatma What's the Gandhi's difference? version is the village democracy model, which came up in the 72nd Amendment and the 73rd Amendment in the, in the Constitution also, where villages do everything. On paper, it sounds awesome. It's like a libertarian utopia. I lean libertarian, but let me tell you, no utopia works. The thing about life is about romanticizing utopias and being realistic. And while you romanticize utopias, then somebody like me should come there and knock you on the head and go, hello, wo utopia hai. And you can always remember, all utopias can only be achieved more often than not through violence. And violence of the highest order. Highest order. ये सब जो sexy बातें होती है ना, change more often than not. एवोल्यूशनरी अगर बायोलॉजी स्टडी करोगे ना, उसमें दो होता है. एक होता है ग्रेजुअलिज्म और एक होता है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम. उसमें ये दो रियल थियरीज हैं कैसे एवोल्यूशन हुई. पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम क्या कहता है, थिंग्स डोंट चेंज एंड देन सडनली वन मेजर चेंज कम्स. वो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम होता है. और ग्रेजुअलिज्म होता है कि हल्के 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 चेंज होते रहते हैं एवोल्यूशन में. ये आप अपनी सोसाइटी पे लाओ. सोसाइटी को एक मीम के जैसे ट्रीट करो और उस मीम को आप देखो कि वो क्या ग्रेजुअलिज्म में चेंज होता है कि पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में. मैं पर्सनली ग्रेजुअलिज्म में लीन करता हूं कि मेरे हिसाब से सोसाइटल चेंजेस हमेशा हल्के हल्के होते हैं. और उसमें क्या होता है, हमेशा आपके यूटोपियंस होते हैं जो यूटोपिया डिमांड करते हैं, और आइडियोलॉग्स होते हैं जो एकदम हार्ड लाइन पोजिशंस लेते हैं. और अनफॉर्चुनेटली म्यूजिक वही होता है जो हार्ड लाइन पोजिशंस लेता है. एंजॉय द म्यूजिक. ये जो लड़का है जिसका तूने लिरिक बोला है, इसके गाने सुनो सब जाके, बस बन नहीं जाना वो. मैं वो कह रहा हूं. अरे यार मैं क्या बोलूं. अभी तेरा दोस्त बोलेगा, साले तूने मेरा लिरिक्स उधर पढ़ के मेरी कच्चे उतरवा दिए. नहीं बट यू विल एक्चुअली लाइक इट. इनफैक्ट उसका ब्रांड है फ्री स्पीच. उसकी कपड़े, वो ही मेक्स रियली गुड टी शर्ट्स दैट हैव फ्री स्पीच ऑन इट. फ्री स्पीच तो वो नहीं है, ये तो आपकी भी लॉबी का पार्ट है. फ्री स्पीच मेरी लॉबी का पार्ट है. इसके लिए मैं उसके यूटोपियन माइंडसेट को सपोर्ट करूंगा एज अ आइडिया टू बी आउट देयर, और अपोज करूंगा एज अ बैड आइडिया विच इज आउट देयर. ओके. फ्री स्पीच इज नॉट यूटोपिया. फ्री स्पीच इज जस्ट वन स्टैंड. बट यूटोपिया इज कि आप हर आदमी को रियल फ्रीडम दे दो. एवरीबडी डज व्हाट दे वांट टू डू. नो, ऑलवेज रिमेंबर, वो हॉर्सशू थियरी होती है. The far light and the far right and the far left eventually meet. They're both similar in how very authoritarian. Very authoritarian. Both are very authoritarian. The far right and the far left. Life is complex. Life is not utopian. Life is full of complexities. And how I wish, there was a genre of musicians who just said, God, I mean, there are,
देयर आर हैप्पी सॉन्ग्स. इसके लिए तो डिस्को म्यूजिक इट्स इतना चलता है क्योंकि लोगों को कुछ टेंशन नहीं है. वैसे सुबह उठो, गाना सुनो, मजा करो, लाइफ इज गुड. वो जॉनरा भी चाहिए हमको. मगर ऑब्वियसली प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो मंकी ब्रेन है या एप ब्रेन है, वो ट्यून्ड फॉर यू नो क्रैश एंड बैंग, out of this world चीजों के लिए होता है. And that's why all these things catch our attention, and that's why this song caught your attention. Your friend must have written many milk toast songs. Let me tell you, if you would have changed the No, lyrics almost also. all of his songs are political, but Yeah, they're awesome. yeah, and good on your friend, and I wish him well. I just hope his ideas don't become reality. That's all. That's all I hope for. That's it. Outside the free speech bit, that should become reality. But but it's good. Like abhi mera dost hai Abhijit, tera dost hai Abhijit. Abhijit is, I know Abhijit for a while. Like, I disagree with many things Abhijit says. It's okay. He's my dear friend. I accept him and love him the way he is, and it's very entertaining. So ऐसा हमेशा होता है. Right, right. So चलो, so before we wrap things up, अच्छा मेरे को एक बात बता कि अभी अभी आगे क्या करने वाले हो तुम लोग दोस्त कास्ट में? What can people look forward to in दोस्त कास्ट? We're gonna fulfill our commitment of being consistent every Tuesday and Friday till the day I die. Hopefully, that's the Very plan. good. I'm proud of you. दूसरा ये कि there's something in the making that I would only reveal when September, October comes. बाकी might be launching a few things. मतलब I don't know मैं कितना यहाँ पे PR media trained वाली ambiguous बातें करूँ बताने के लिए. कुछ करो बड़ा होने करो वाला है. करो करो. Roughly ये बात है कि कुछ बड़ा होने वाला है. बाकी you can expect episodes as always every Tuesday and Friday. I'm going to be traveling. अभी बहुत सारी चीजें हैं. It's sort of up in the air. Should we do like offline events where we do it live? Do we do it with lapel mics and travel across Rajasthan, covering musicians, going across Bengal? ये सब चीजें हैं. A lot of these are logistics heavy. So अभी के लिए तो you can just expect brand new episodes. You can expect a few. I think more and more. मेरे को जो the archaeology episodes I did, the one I did with the head of AI department at IIT Delhi, I want to do more of those. It's just one of the problems in India is it's just harder to grab a hold of academics, convince them that nothing bad will happen, and They don't then know what a get them to my podcast studio. is. They don't know what a podcast is. Basically, उनको समझ में नहीं आता. I have faced this. I mean, American academics, they are very open to it. So they Right. come. उनके लिए तो outreach है वो. This is outreach. इंडियन एकेडमिक्स को क्या है कि उसके बहुत सारे रीजन भी होते हैं. देख, अगर तू लेफ्ट विंग एकेडमिक को बोलेगा ना, वो आ जाएगा. मगर अगर तू एकेडमिया के अंदर है और तू लेफ्ट विंगर नहीं है, तेरा करियर खत्म कर देंगे वो लोग. इसके लिए वो नहीं आते हैं. अच्छा, बट नहीं आई ऑलवेज मेक श्योर कि मतलब वो तो कभी कुछ खुद ही कह देते हैं कि डिपार्टमेंट वाली कोई बात नहीं करनी. तो द फ्यू दैट हैव कम हैव बीन जस्ट नॉन पॉलिटिकल. यार टेल मी समथिंग. आई हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन फॉर यू कुशल. यार ये ऑड्री टुस्के कौन है? ऑड्री ट्रुस्की मेरी फेवरेट है. उसके ऊपर मैंने पूरी टी शर्ट बनाई है. मैं उसके ऊपर, उसको लगता है कि वो सर्वज्ञानी औरत है, जिनानी, जिसको सब कुछ पता है. उसको लगता है औरंगजेब ने कुछ बुरा नहीं किया. औरंगजेब के ऊपर नुआंस व्यू होना चाहिए. शी इज दैट वन बैड स्कॉलर हु इज ट्राइंग टू नॉर्मलाइज औरंगजेब, एंड आई लव हर सो मच दैट आई डेडिकेटेड अ टी शर्ट फॉर हर. एंड मतलब वो ऐसा एवरी टाइम somebody challenges her ना, तो वो कहती है आई एम अ PhD, आई एम द स्कॉलर. तो मैंने उसका नाम है ना तेजा रख दिया, कि जैसे तेजा बोलता है ना, तेजा मैं हूँ, मार किधर है, तो वैसे वो PhD मैं हूँ, डिग्री she इधर है says करती that रहती. she uses या that credibility stamp. यस यस. Hmm. और इन ऑन द श्याम शर्मा शो, ऑड्री ट्रुस्की इज कॉल्ड श्याम शर्मा's वाइफ. Why is that? ऐसे ही किसी ने बना दिया एक हैंडल. वो ऑड्री बेगम करके आती है, श्याम की वाइफ करके. That's crazy. यार the reason I brought her up is because उसकी जो messaging थी ना, I found it very amusing and kind of like weird also. उसकी website खोल के it says, have you been part of a Hindu right-wing attack? अगर आप हो, this is a toolkit to help you out. मैंने कहा पैंचो ये किस तरह का सीन है? So I mean, what is weird उसको is बुला, एक काम कर, उसको बुला, मजा आ जाएगा. हाँ, नहीं अमेरिकन एकेडमिक हिंदू राइट विंग में क्या दिलचस्पी ले रही है वहां से कुछ, बैठ के? वो इंडोलॉजिस्ट है, उसकी स्टडी इंडोलॉजी है. एंड शी, ये उसकी दाल रोटी है. द मोर शी अटैक्स, द मोर शी स्टेज रेलेवेंट. पर उसकी प्रॉब्लम ये है कि शी हैज बीन एन एनेबलर ऑफ नॉनसेंस. शी हैज बीन एन एनेबलर ऑफ
tons of Hindu hatred. Let me tell you, she, on a very serious note, she's a bad player. She's a bad player, and I don't see. I always say, never attribute to malice that which can be attributed with stupidity. It's a famous razor called the Hanlon's razor. In Right. Audrey, I think we should attribute to malice, not stupidity. I think she's a player with malintent. I used to think differently, but now over the period of time, her behavior, she clearly has some serious Hindu hatred. She clearly has some really weird views when it comes to Hinduism. And before somebody accuses me of not reading her book, I have. I actually read her Aurangzeb book. I did the hard yards. I read her material too. And I think she tried to defame Vikram Sampath through a horrible paper, accusing Vikram of things that Vikram has not done. And I'll let Vikram speak on that. And Huh. Vikram took her to court. And by the way, the courts ordered her tweets to be taken down in India. There you go. That's crazy. पर उसका मतलब क्या है यहाँ से? वो तो अमेरिका के एकेडमिक है, तो ओ वो यहाँ बैठ यार, के उसकी कैसे? दाल रोटी चलती है, वो इंडोलॉजी डिपार्टमेंट की एकेडमिक। इट इज लाइक यू आर सिटिंग इन अमेरिका बट योर हाँ, डिपार्टमेंट इज इंडिया। तो उन्हें तो आना ही है हाँ। ना साढ़े मैटरा में। तो नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, अजंता की पेंटिंग्स देखो, ये देखो, वो देखो। ये क्या उल्टी एसीएलयू टाइप भाई बकचोदी है जो ये होता है उस ना? अरे बंदी ऐसी है। शी हैज मेड स्टेटमेंट्स इन द पास्ट वेयर शी हैज सेड भगवान श्री राम इज अ पिग। Yes, she has said some things व्हाट? like that. Yes, she has said many things like that. And बहुत सारी चीजें बोली हैं उसने। एंड उसने बेसिकली है ना, एक्चुअली दिस इज द परफेक्ट थिंग, ये बंदे ने जो मैसेज, शी बेसिकली सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉयड द लेजिटिमेसी ऑफ वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज इन मेन स्ट्रीम स्फीयर। शी एक्चुअली हैज डन दैट। देयर आर रियली गुड इंडोलॉजिस्ट इन द राइट। वेस्टर्न यूनिवर्सिटी सर्कल, गोरे हैं जो एक्चुअली में अच्छा ओरिजिनल काम कर रहे हैं। ये जो बंदी है ना, इसने अपनी हॉरेंडस हरकतों से टोटल जो इंडोलॉजी का स्पेस है ना, उसकी टट्टी कर दी। उसने सारे इंडोलॉजिस्ट को बोल दिया कि अभी ये ऑड्री जैसे ही होंगे, हम इनको ट्रस्ट, मालूम है, कम्युनिटी कैन नॉट ट्रस्ट इंडोलॉजी एनी मोर हियर। मैं अभी इस समय नॉर्थ अमेरिका में हूं, मैं तेरे को बोलता हूं, टोटल जो डायस्पोरा है अपना, हिंदू डायस्पोरा, वो एक चवन्नी का भरोसा नहीं करता ये इंडोलॉजी डिपार्टमेंट्स का। उनको लगता है कि ये सारे ऐसे हैं, जबकि वो सारे ऐसे नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मगर अब ऑड्री जैसे लोग अगर आएंगे और ऐसी बकवास करेंगे और कुछ भी थियरियां पेलेंगे, तो यार नेचुरल है डायस्पोरा डिफेंसिव होगा। और सोच, वो रटगर्स में है जहां पे 6-7 हजार हिंदू बच्चे हैं। 6 से 7 हजार हिंदू स्टूडेंट्स हैं रटगर्स में। रटगर्स में भर भर के हिंदू हैं, और वहां पे ऐसी रटगर्स ने प्रोफेसर रखी है जो उन बच्चों के भगवान के बारे में ऐसे थॉट्स रखती है। तू सोच वो बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी। मतलब वो उसने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, इफ यू आर सब्जेक्ट टू अ हिंदू राइट विंग अटैक दिस इज व्हाट यू शुड डू, और उसने पूरा गाइड बना रखा है। हाँ, तो उसकी दुकान है ना, उसने तो दुकान खोल के रखी है। देखो ये लोग है ना, बड़े सिस्टमैटिक होते हैं अपने कामों में, ये बड़े सलीके से अपनी दुकान चलाते हैं। हमको इनसे दुकान कैसे चलानी वो सीखना चाहिए, और फिर हमारी दुकान इनके खिलाफ चालू करनी चाहिए, और हम भी पैसे बनाए, ताकि हाँ। मैं भी करूंगा, सब लोग करो। मगर ये जो बंदी है ना, ये बंदी ने दुकान खोल रखी है कि औरंगजेब नॉर्मल है। देखो मेरा सिंपल है, औरंगजेब इज द हिल दैट आई विल डाई ऑन। तुम अगर औरंगजेब को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करोगे ना इंडिया में, दैट इज फॉर मी लाइक नॉर्मलाइजिंग हिटलर। मैं नहीं राइट। होने दूंगा। आई विल अपोज इट tooth and nail with all my intellectual might, and I will do whatever is I can as a public speaker to oppose this woman. She is a bad player, and I say this with full responsibility after reading her book, by the way, after reading her book. ये मेरा आंसर है। तो गॉट इट। ऑन दैट वेरी ऑस्पिशियस नोट आज की पॉडकास्ट खत्म करते हैं। सो विनम्र, very I'm very happy that you came on the podcast. I'm happy what you are doing in your own space, और जो प्रखर कर रहा है उसके space में। I've always had a very soft corner for both you and Prakhar, and I wish you all the best, थैंक and यू I कुशल, hope you थैंक यू सो become मच। very 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 big in life. थैंक यू सो मच, आई लुक फॉरवर्ड टू बीइंग वोलॉप्शियस।
Yes, very good. And like our deal was on WhatsApp, जब तू बहुत बड़ा आदमी हो जाएगा, तू मुझे एक सी फेसिंग बंगलो गिफ्ट करेगा. यही काम है मेरा, शुगर डैडी बन जाओ। हाँ. बस बस मैं हर आदमी को यही बोलता हूँ, तुम खूब तरक्की करो, बहुत सारे पैसे कमाओ और फिर मुझे दे दो. बस मेरा काम वही है डन है। लाइफ में. यही हाँ, होता है, मैं कुछ मेंटर नहीं फिगर का करूंगा. रोल भी यही होता है, इन्वेस्टमेंट करो अर्ली। ऐसे। हाँ. सही है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैड Okay, अ फन chalo. टाइम। All right, guys. Okay, so if you've not subscribed to DostCast, please go and subscribe to his channel. In the description of the podcast, I have left Vinamre's Twitter handle, so please go follow him on Twitter or subscribe to the YouTube channel of DostCast. Go and check it out. He has really nice discussions. Check this one particular discussion out with one or two discussions he's done with archaeologists. You'll really enjoy it. I loved it. जाके जरूर देखना, वो मुझे अच्छा लगा, इसके लिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ वो दो डिस्कशन. एंड एज फार एज आई एम कंसर्न, यू नो द ड्रिल. You can subscribe to the Cārvāka podcast YouTube channel. You can like this video. You can comment and abuses for Vinamre and nice things for me. And other than that, you can become a member on YouTube or on Patreon, or you can buy the merch, or you can send your donations through UPI. I'll see you guys next time. Until then, namaste. Take care. Bye bye.